Very good afternoon to the viewers of this very important topic, VCM. What is research? It was planned with the hosting branch Bhilwara and organized by the research committee, one of the oldest technical committee of the Institute of Chartered Accountants of India. With profound grief and with heavy heart, I'm stayed to share with you that the learned Professor Manoj Kumar, Professor of IIM Jammu, who kindly consented to deliver this lecture, is not with us. He departed for the MLE, and due to this cardiac arrest attack, he is not with us today, and we lost him. So, for we can pray for this MLE. So I would request all the panelists as well as the viewers of this webinar to keep observe 2 minutes silence for prayer of departing soul. Also, Om Shanti Shanti Shanti. Profile. Professor Manoj Kumar was working with the IIM Jammu. He was having 23 years of experience in various areas of academia, consulting, and many other topics relevant to the profession, academia. So we really miss the deliberation of Professor Manoj Kumar, and he is not with us. We pray to God for his second journey. So, with these words, I would request Nirbhik Gandhi ji, the chairman of Bhilwara branch of CIC of ICI, for his welcome address. थैंक यू अमित जी। भिलवाड़ा ब्रांच की ओर से आयोजित भिलवाड़ा ब्रांच और रिसर्च कमेटी की ओर से आयोजित इस वर्चुअल सेमिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज आप सबकी उपस्थिति भिलवाड़ा ब्रांच में हम सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, लेकिन बड़े ही दुख की बात है कि आज हमारे लर्नेड स्पीकर मनोज सिंह जी, जिनका सानिध्य मिलने वाला था, वो आज हमारे बीच नहीं है। हम परम पिता परमात्मा से उनकी आत्मा को शांति प्रदान की कामना करते हैं और उनके परिवार के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हैं। आज हम सबके लिए गौरव की बात है कि आज हमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे अपने लाडले काशी विश्वनाथ की धरती पर वर्तमान में विराजित हमारे हरदिल अजीज सेंट्रल काउंसिल मेंबर और रिसर्च कमेटी के चेयरमैन अनुज गोयल सर का सानिध्य प्राप्त हुआ है, जिनका निरंतर सदैव हमें सानिध्य मिलता रहा है। साथ ही आज एक और हमारे लिए गर्व की बात है कि हमें मोस्ट सीनियर एंड एक्सपीरियंस मेंबर या यूं कहूँ रिसर्च के विश्व पितामह श्री रविंद्र पवार जी का सानिध्य भी प्राप्त हुआ है, उसके लिए सर आपका हार्दिक आभार। साथ ही आज हमने हमारे लंडन स्पीकर श्री विश्वास गुप्ता जी अपनी वाणी से हमें लाभान्वित करेंगे, उसके लिए मैं सर आपका भी अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। सर, भिलवाड़ा ब्रांच आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत 75 कार्यक्रम 15 अगस्त 2022 तक करवाने जा रहा है, जिसकी श्रृंखला में एक वर्चुअल सेमिनार का आयोजन आज हम करने जा रहे हैं। इसमें जुड़े हमारे सभी साथियों का भी मैं भिलवाड़ा ब्रांच की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ और मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहूंगा अमित सर को कि आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दान की भिलवाड़ा ब्रांच को, उसके लिए सर थैंक यू सो मच। Thank you, Nirvik Gandhi sir, for your wonderful welcome address. And we have very learned member of the profession, very senior member. Today, fortunately, we have two members with us of the profession who possess all the qualification of all the three institutes. One is my own chairman, C. Anuj Goyal, who is the member of all the three institutes, CA, CS, ICWA, as well as the similar quality we are having with the dignitary
C.A. Ravin Pawar sir, who is also the member of all the CA, CS, ICWA. For word of wisdom from Ravin sir, I request him to deliver his address. Good afternoon, my very learned and dynamic professional colleagues. First of all, our learned professor passed away. That is concern for all of us, and we can only pray to God to the needful. Secondly, under the leadership of Anuj Goyal ji, Amit Agarwal ji and his team, this research committee is doing a wonderful job. Today we may say that it is not that useful, but research is always useful in future, because we are to build up the future. First we learned, then we experienced, we executed the work, and then we learned. And then we reinvent for the future events and for the future betterment. So for the better future, research is the only concept that we can make our future better for ourselves and for the generations to come. With these words, I request Amit ji to take the proceedings further. Thank you very much. Thank you, Ravin sir, for this ice-breaking opening remarks. And with these words, now, with the permission of my chairman, he is landed at the Kashi Vishwanath Bhumi and surrounded by the leadership of Varanasi branch. So, Chairman sir, if the leadership of Varanasi branch is with you, and if you can request them to grace this occasion with their words of wisdom. Over to Chairman sir. Yeah, thank you, Dr. Amit Agarwal ji. We are having CA Somdat Raghu ji, our honorable chairman of Varanasi branch. May I request Mr. Raghu, our honorable chairman of Varanasi branch, to say two words, and Raghu sir is requesting to all our honorable leaders of the profession and the members of the Bhilwara branch, very active branch, has produced, I think, more than 30,000 chartered accountants. And they are spread in each and every part of the country. We are having ICI Award for Excellence in Financial Reporting, one of very prominent, prestigious award function of the Institute of Chartered Accountants of India, of the Research Committee, on 20th of January at Varanasi. And we are trying that if Prime Minister Modi can also come. So may I request Somdat Raghu sir to say a few words on this, our chairman of Varanasi. Namaskar, good evening to all present here, and it's a communication between Varanasi to Bhilwara, काशी से भीलवाड़ा को हमारा शुभकामनाएं पहुंचे आप लोगों के पास, यही कामना है हमारी। आज हम लोगों के लिए बड़ी खुशी का दिन है और गौरव का क्षण है कि अनुज सर ने एक प्रोग्राम डिसाइड किया है और वी आर डिस्कसिंग अबाउट इट, एंड वेरी सून वी विल share all the details with you, all eminent personalities present here, and we invite you to the program. जैसा भी फाइनल होगा हम लोग आपको सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ सभी के साथ शेयर करेंगे और आप सभी का स्वागत करने के लिए हमारी पूरी कमेटी तत्पर रहेगी। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी से जनवरी में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। And we are having the presence of CA Kamlesh Adwal ji, our co-opted member of one of very prominent committee, MSME and startup of the Institute of Chartered Accountants of India. May I request CA Kamlesh Adwal ji, past chairman Varanasi branch, to say a few words. नमस्कार आप सभी को। बनारस में काशी विश्वनाथ की धरती की तरफ से मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग का सौभाग्य है कि अनुज भैया हम लोग के साथ में हैं और इतना एक एक्सीलेंसी अवार्ड फंक्शन वाराणसी में करने जा रहे हैं, जो बहुत ही गौरव की बात है हम लोग के लिए और हम लोग को एक अपॉर्चुनिटी मिली है। मैं ऐसा करता हूं कि आप सभी लोग इस फंक्शन में जरूर आएं और जो यहाँ पे बनारस में भी जो कॉरिडोर चेंजेज हुए हैं, काशी विश्वनाथ का दर्शन करें और बनारस में जो भी नया डेवलपमेंट हुआ है उसको आप लोग देखेंगे तो वास्तव में कहेंगे कि नहीं, बनारस ने
में मोदी जी ने कुछ किया है। तो मुझे आशा है कि जैसे ही प्रोग्राम के साथ फाइनल होता है आप लोग तक सारी सूचनाएं पहुंचेंगी। आप लोग का स्वागत है यहाँ पे। धन्यवाद। Thank you, Kamlesh Agrawal ji. And over to Dr. Amit Agrawal. Yeah, thank you, Chairman sir, and for providing this opportunity to receive the blessings of Varanasi branch. Now, I would request CA Alok Somani ji, Sikasa Chairman of Bhilwara branch of CIC of ICI, to briefly introduce our worthy Chairman, C. Anuj Goyal ji. Over to Alok Somani ji. Good afternoon, everyone. Without further ado, it's a tremendous pleasure for me to welcome and introduce CA Anuj Agrawal. CA Anuj Agrawal is a Central Council member of the Institute of Chartered Accountants of India, ICAI. He has made significant contribution to the profession with his extraordinary tenure of 16 years in Central Council, 3 years in the Regional Council, and 6 years in the branch, including Chairman of the Central India Region Council, Chairman of various ICAI Central Committees, member of the editorial board, and so on. He is currently the chairman of the research committee, the ICAI's oldest technical committee, as well as the chairman of the Committee on Financial Markets and Investors Protection, CFMIP, which organizes training programs, seminars, conferences, and certificate courses on financial markets, investor protection, and other related laws. He is also vice chairman of peer review board. He has a vast reservoir of knowledge that is supported by various professional degrees, including CA, CS, CMA, ICWA, LLB, AMCOM, DISA, and DIRM. He is also the president of Reliable Group of Education Institution, Ghaziabad, and director at Lions Club of Ghaziabad since 2005. Thank you. Thank you, Alok ji, for this brief introduction of my worthy chairman. And now I would request my chairman, CA Anuj Goyal ji, for his opening remarks. Over to CA Anuj Goyal ji. I think some technical issue is there. Before he starts speaking and deliberating on his topic, I take this opportunity to give more introduction, briefly something new, which is not known to the members about C. Anuj Goyal ji. As rightly said by Alok Somani ji, that C. Anuj Goyal ji is the member of all the 3 institutes. One thing I think is not known to the members, that he is the person who headed ICSI at Ghaziabad level. He headed ICWI also at Ghaziabad level. So he served in the branch, ICI branch also. He is the person who is having the experience of all 3 institutes, not by qualification, as well as a office bearer of all the 3 institutions. So I think he is the best person who can have a coordination between all the 3 professions. So by the time my chairman joins, I give you brief about this topic. What is research? I take this opportunity. I'm sharing with you few of the words which maybe my chairman would like to share with you, but I take this opportunity to share with you the 3 of the schemes of the research committee. Before this formal inaugural of this session, we were discussing about the International Research Award. The International Research Award was instituted in 2020 by worthy chairman C. Anuj Goyal ji and the able leadership of the then president C. Atul Gupta sir. So that time, the International Research Award was the first in the history of accounting profession. You won't believe that under the able guidance of the C. Anuj Goyal ji, this award was held in the Corona period, and it was grand success.
it was well appreciated by the community, not only in India, globally. 11 countries participated in this award ceremony by nomination, and you won't believe the IFAC president, the then IFAC president, Dr. Inki Ju, was the jury chairman. And jury consists of 5 international juries. So none of the jury member is from India. All 5 international jury was there, and whole system is online. No manual intervention is there. So this is the beauty of, this is the experience of my worthy chairman. He has given the guidance to the committee that such a wonderful program we have organized in form of International Research Award. This is the 3rd year of this International Research Award. Through this platform, I would urge all the viewers and as well as the panelists to popularize this event, make it a grand success. We would be having the award ceremony in the month of August, and 31st July is the last date for receiving the nominations. My chairman is now with us. He is again joined. So I should not be in between to you and this worthy chairman. So I would request C. Anuj Goyal ji for his opening remarks, please. Thank you, Dr. Amit Agarwal ji. I'm sorry for the technical glitches on my part. So I'm really very sorry that Professor Manoj Kumar ji, very prominent resource person who was the chairman of the MBA course of the IIM Jammu, who was supposed to take this session on this very, very important topic, what is research, is no more with us. But I think it would be a real tribute from all of us that we should have this program, and we should remember him, and we should try to see that how we can really do something concrete in the field of the research. We are having the presence of our very prominent resource person, Dr. Vishwas Gupta ji. We are having very prominent chartered accountant, C. Ravindra Singh Pawar sir, Dr. Amit Agarwal ji, Secretary of the Research Committee, as well as the Secretary of the Committee on Financial Markets and Investors Protection of the Institute of Chartered Accountants of India. And of course, our very Nirbhig chairman of Bhilwara branch, very, very prominent branch of Central Region from the state of Rajasthan, C. Nirbhig Gandhi ji, our very, very wise chairman, C. Dinesh Agal ji, Sonesh Kabra ji, Secretary of the Bhilwara branch, Atal Murli ji, our Dhankuber of the Bhilwara branch, Sikasa chairman Alok Somani ji, and our managing committee members, Vineet Jain ji and Puneet Mehta ji. And we are, of course, having the presence of C. Somdat Raghu ji, the chairman of Varanasi branch, Saurabh Sarma ji, the secretary of the Varanasi branch, C. Neeraj Singh ji, our honorable member of the managing committee, and C. Kamlesh Agarwal ji, our past chairman of Varanasi branch, and honorable co-opted member of the Central Committee on MSME and Startup. And I think we are having thousands of viewers from each and every part of the world live with us. A very, very good afternoon to all of you. And friends, I'm quite aware that the chartered accountants generally do think that research is not their cup of tea. I think we are having the wrong thought process. Nirbhig Gandhi ji, when we were having one program of the research committee, was also having the same opinion, but slowly his opinion is also changing, and we are still waiting for his attahas on this research matter. And let me tell you, the chartered accountants who have passed one of the toughest examinations of the world are the best suited professionals who can really do wonders as far as the research is concerned. And let me tell you, the chartered accountants are the professionals who are learning, unlearning, relearning like anything. And this is the research which is supposed to be taken by any professional. See, every year
Rather, on time to time basis, there are changes in the direct tax laws. There are changes in the GST law on the day-to-day basis. And in addition to that, whether it is Companies Act, we are of course having a lot number of seminars and workshops on various changes which have taken place in Schedule 3 and CARO 2020. So I think the chartered accountants are the best suited professionals who can really do wonders in the as far as the research activities are concerned. And I'm really very happy that Bhilwara branch is very active branch, and they ensured that a very prominent resource person, Anil Singhvi can be with us in our national conference, which is supposed to be held on 28th and 29th of May, Saturday and Sunday, day after tomorrow. And on Sunday, 28th and 29th of May at Radisson Blu, Kausambi, Ghaziabad. So I will request all of you to please be the part of the national conference to be held at Ghaziabad. And we will be having the presence of very prominent resource persons, including Dr. Girish Ahuja and Anil Singhvi and Rudra Murthy who is going to teach us the various aspects as far as the capital market is concerned. Friends, given the rapid pace of change in the modern business landscape, we as professionals need to continually develop new knowledge and new skills to broaden horizons and identify new opportunities. Keeping that in mind, we at ICI regularly strive to continuously update and educate our esteemed members to enhance their professional competency and growth through conducting various knowledge enriching webinars and VCMs on research and related areas. And friends, you must be aware that when I took over as the chairman of the research committee and Dr. Amit Agarwal as the secretary of the research committee, I think we tried our level best to see that how we can really do wonders as far as the research activities are concerned. And the development of any organization, particularly any educational institution, and more particularly the statutory body like the Institute of Chartered Accountants of India, is only possible when the research do take place, because research comes first, then the development took place. And we tried our level best to see that how we can have the Institute of Chartered Accountants of India in the mainstream of the accounting profession. We started ICI research project scheme, in which a lot number of chartered accountants have come forward from each and every part of the world and undertaken various research projects. In that research project scheme, we do reimburse up to 10 lakhs of rupees per research project, and the research findings were very important for the nation. And we have handed over those research findings to the various ministries, various central and state governments. And I'm quite confident that we will certainly see that how we can try to do something very concrete as a true partner in nation building through research activities, through research projects. We are trying our level best to see that how we can really contribute for the upliftment of our great nation, and we can be the real partner in nation building. That then in the history of the accounting profession, for the first time, we come out with the ICI International Research Award. This is the third year, and let me tell you, Institute of Chartered Accountants of India, the research committee of ICI, is the only accounting body which has come out with the ICI International Research Award. And in this ICI International Research Award, the researchers from each and every part of the world are coming forward, are the part of this ICI International Research Award. And the president of International Federation of Accountants, IFAC president, was the chairman of the jury in the very first year also, and in the very second year also. This year, we are going to have ICI International Research Award at Patna. Last year, we had it at Ranchi, and we are ensuring that our cities, whether it is Varanasi, whether it is Ranchi, whether it is Patna, can come in the mainstream and can be treated as the international destination. And Patna is one such place which has shown, which has given the knowledge to each and every part of the world. In the same time, the Patliputra is known, Nalanda University is known for that particular purpose. And we are sitting at Varanasi. We are having the ICI Award for Excellence in Financial Reporting at Varanasi. And unless and until you will be the member of parliament
from Varanasi and will be having the blessing of Ganga, I think you will not be in a position to be the Prime Minister of the country. Everybody is aware of that. And I'm quite confident that the research committee will be having the blessings of Baba Viswanath, and we will certainly have the ICI Award for Excellence in Financial Reporting in the best possible manner here at Varanasi. Friends, simply put, research is the process of discovering new knowledge, and this knowledge can be either the development of new concepts or the advancement of existing knowledge. No matter how many experiences you have or how diverse your social circle, there are things you don't know. Research unlocks the unknowns, lets you explore the world from different perspectives and fuels a deeper understanding. In some areas, conducting research is not just important, it's imperative. You may already have opinions and ideas about a topic when you start researching. The more you research, the more viewpoints you will come across. This encourages you to entertain new ideas and perhaps take a closer look at yours. You might change your mind about something or at least figure out how to position your ideas as the best ones. Research can find solutions to fill gaps in knowledge and changing the way that professionals work. It would not be wrong to infer that going forward, there is going to be immense opportunities for our esteemed chartered accountants in the field of research. Therefore, friends, today we will be discussing about this concept. And friends, one very, very important decision we have taken last year, that ICI doctoral scholarship scheme for the young chartered accountants up to the age of 40 years. The chartered accountants who are going to do the research on the full-time basis are going for their thesis for the PhD on full-time basis. We will be giving the honorarium of 50,000 rupees per month for 3 years, and only for 5 those research scholars are eligible for that. So we are trying our level best to see that how our young chartered accountants more particularly can be the part of the research initiatives of the Institute of Chartered Accountants of India. Of course, we are not having Professor Manoj Kumar, but Vishwas Gupta ji is a very, very prominent resource person, educationist. And I think when we are having Dr. Vishwas Gupta ji amongst all of us, we will be certainly getting the knowledge about the research, because the basic, unless until we will be knowing the basic, that what is exactly the research. We do think that research is a very, very big thing. If you break research, it is re and then search. This is research, and Dr. Vishwas Gupta ji will be, of course, throwing more light. I am also doing the research. My thesis, my PhD since last 7 years. So unless or until I think I will be having the full knowledge, I will not be getting the doctorate degree. So it can be very easy for someone, and like Dr. Amit Agarwal, and it can be very, very difficult for someone like Anuj Goyal, but I'm quite confident with the blessing of all of you, I will be certainly getting some very, very good knowledge about the research, and then I will also be there as Dr. C.A. Anuj Goyal. So without taking you further time, I once again welcome Professor Dr. Vishwas Gupta ji and all our honorable leaders of the profession from Bhilwara branch, and of course of the Varanasi branch. And we are having more than 1,000 viewers from each and every part of the world. I welcome all of you to this webinar. Thank you very much, friends. Thank you, my energetic chairman, C. Anuj Goyal ji, who is given a very, very wonderful opening remark. I think in quite few minutes, I think not more than 5 to 7 minutes, he has briefed about all the vision of ICI in the research domain. And let me share with you, I'm very grateful to him and my management that this opportunity is being awarded to me to act as a secretary of this oldest technical committee. But I should be honest enough that without the able guidance of C. Anuj Goyal ji, what we are observing, the activities of research committee in past 3 years, or rather 2 years since 2020, it's not because of me. It's only and only because of the leadership of the ICI
and the able chairmanship of CA Anuj Goyal ji, who is very dynamic. I think this is the reason he has been every year awarded as the chairmanship of this oldest technical committee. So I would be deliberating on few of the points in between, but first I would request CA Dinesh Agal sir, the Vice Chairman of Bhilwara branch of CISA of ICI, to kindly briefly introduce Dr. Vishwas Gupta. थैंक यू सर. सबसे पहले तो डॉक्टर मनोज कुमार जी जो हमारे बीच नहीं रहे, बड़ी दुख की बात है. उसके लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं. और उसके बाद रेस्पेक्टेड अनुज सर, रविंद्र सर और ब्रांच चेयरमैन निर्भीक जी और अदर कमेटी मेंबर्स, आप सभी का स्वागत है. मैं डॉक्टर विश्वास गुप्ता के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा. डॉक्टर विश्वास गुप्ता ने पीएचडी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से किया है. एमबीए रॉयल खंड यूनिवर्सिटी बरेली से है. बीएससी इन्होंने बरेली से किया है. ये अभी प्रेजेंटली एसोसिएट प्रोफेसर एट मित्तल स्कूल ऑफ बिजनेस, लवली प्रोफेशनल एकेडमी एट पंजाब. इन्होंने डिस्टिंग्विश्ड टीचर अवार्ड फ्रॉम एमटीसी बेंगलोर से रिसीव हुआ है एंड रिसर्च एप्रिसिएशन अवार्ड फ्रॉम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी. ये बहुत सारे रिसर्च पेपर्स इन्होंने सबमिट किए हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में, और 4 टेक्स्ट बुक इनकी पब्लिश्ड अभी तक हुई है. इन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर में 5 साल काम किया है. 2 साल सिलेक्शन पॉइंट बाजार प्राइवेट लिमिटेड एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव और 2 साल साराभाई फार्मास्यूटिकल एज ए सेल्स मैनेजर और 1 साल आईसीआईसी प्रूडेंशियल एज ए यूनिट मैनेजर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. Thank you, Dinesh ji. Sorry, I was on mute. For giving a wonderful introduction of Professor Vishwas Gupta, who is my good friend, and we co-authored a book on fundamental of research methodology, a beginner's module. It was written for the Institute of Chartered Accountant of India. In 2020, when there was a corona period and everybody was in dilemma, so we took this opportunity. I still remember those days when we start thinking this process at 9 o'clock in night. We start discussion and till late night, 12, 1, 2, and then we came out with one publication. And after that publication, we had 5-day training program on research methodology, how to use statistical tools in research methodology. 2-3 sessions we have. Then we had an advanced training program on the research methodology. So for me, Vishwas is one of my good friend, and so I'm quite sure that today he will be complimenting our late Professor Manoj Kumar ji. Although we miss him, it's a great loss to the society. With these words, I would urge Professor Vishwas Gupta ji for his deliberation on what is research. Thank you, sir. Over to Vishwas Gupta ji. Okay. Very good afternoon to all of you. I hope I'm audible clearly to all of you. Okay, thank you. Right, so let's start. Let me share the screen, then we will cover up the point. Okay, so देखिए research अगर मैं बात करता हूँ, right, so it means that we have to get publication. Means हमें कुछ लिखना है, चाहे तो हम न्यूज़पेपर में लिखें या हम कोई आर्टिकल लिखें मैगजीन्स में, या फिर है आज की डेट में अगर हम देखें अभी इंडियन गवर्नमेंट भी धीरे धीरे जो सी इंस्टीट्यूट है उसको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं. पर्पज उनका यही है कि वी नीड मोर रिसर्च, राइट. मींस उनको रिसर्च चाहिए. सो मेरा
और अमित सर का पर्पज यही था कि हमारे जो जितने भारत भर में सीए हैं, दे आर वेरी एक्सपर्ट इन देयर फील्ड, बट अगर हम रिसर्च की बात करते हैं तो वहां पे थोड़ा सा हमारा एक वीक पॉइंट आ जाता है. तो रिसर्च इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, बट ओनली एंड ओनली वी नीड 3 things. We need passion, we need one idea. Vishwasi, I would interrupt you. My members are very good in research, but in academic research and tools. Yeah, I'm talking about that thing only. Every day they do research. Every day they do research. Yeah. Okay, right. Purpose वही था क्योंकि statistical test की जब हम बात करते हैं, right? तो only 3 things I require. We need passion, we need idea, and we need little knowledge about that. So passion आपके पास सबके पास है, तभी आप यहाँ पर बैठे हैं. आइडियाज अभी अमित सर ने बोल दिया, यू ऑल ऑफ यू हैव. सो मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा अगले 1 घंटे में कि क्या हम कौन सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज कर सकते हैं, कैसे करते हैं. हाँ जी, ओके, राइट. सो लेट्स सी, देखिए अगर हम ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें अगले 1 घंटे में हम क्या करने वाले हैं. सो विल जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट कि रिसर्च क्या है, रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होती है, और हम डेटा एनालिसिस कैसे करते हैं. फिर हम कौन कौन से स्टैटिस्टिकल टूल होते हैं, मतलब स्टैटिस्टिकल टूल कौन से होते हैं, मैथमेटिक्स हाउ वी अप्लाई लिटिल बिट मैथमेटिक्स इनटू दैट, क्या वी टूल मैनुअली या सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है, राइट. फिर हम प्रोजेक्ट कैसे लिखेंगे. ग्रांट आपको पता है, यूजीसी ग्रांट है, आईसीआई वी आल्सो प्रोवाइड ग्रांट्स. अमित सर ने बहुत सारे फंडेड प्रोजेक्ट लिखे हैं, ही हैज कंप्लीटेड सो मेनी प्रोजेक्ट. सो क्या आप लोग भी कर सकते हैं, तो हम उसका भी एक थोड़ा आइडिया लेंगे, राइट. एंड फाइनली वी विल जस्ट सर्च, ट्राई टू फाइंड आउट हाउ टू राइट ए गुड रिसर्च पेपर. एंड एट द एंड मैं आपको ये बताऊंगा कि आप डेटा कहां से कलेक्ट कर सकते हैं. आई एम श्योर ऑल ऑफ यू हैव डिफरेंट सोर्सेस, बट जो एकेडमिक डेटा है, जिसको आप अच्छे जर्नल जो पब्लिश करते हैं, उसका डेटा आप कहां से लेंगे, तो वो मैं चीजें एट द एंड आई विल ट्राई टू कवर. ओके, वेल उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि देखिए जल्दी से एक देखते हैं 3 पेपर एकेडमिक पेपर लिखते कैसे. तो देखिए एक पहला पेपर है, बहुत पहले लिखा था मैंने, आई थिंक इट इज इन 2016, राइट. लेट मी जस्ट, ओके. देखिए होता क्या है, पेपर लिखा कैसे जाता है. इसमें इस पेपर में कोई भी मैथमेटिक्स यूज नहीं हुआ है, नो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, हम लोगों ने कुछ नहीं किया. व्हाट वी हैव डन, वी हैव टेकन ए सिंपल कंसेप्ट कि भारत एक गरीब देश है, लेकिन भारत में जो बाहर के टूरिस्ट आते हैं वो क्या देखने आते हैं. दे कम टू सी दी पॉवर्टी ऑफ इंडिया. वो भारत की गरीबी देखने आ रहे हैं. दे गो टू स्लम एरियाज, दे गो टू झुग्गी झोपड़ी, ओके, दे गो टू रूरल एरियाज. बाहर जाते हैं और उनको देखते हैं, उनके फोटो खींचते हैं और वो उस फोटो पे प्राइज जीतते हैं. तो ये बड़ा एक क्रिटिकल पॉइंट था, तो इसको रियलिटी टूरिज्म का नाम दिया था. तो देखिए इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं है, एक आइडिया था, राइट. उसको अच्छे तरीके से लिखा गया, इस कहानी की तरह लिखा गया, राइट. तो देखिए आपको करना क्या है, आप बस पेपर को देखिए, आपको देखिए कि उसमें हेडिंग कौन कौन से यूज हुए हैं. देखिए सबसे पहले टाइटल आया, ओके. फिर देखिए हेडिंग आता है एब्स्ट्रैक्ट, राइट. अगर आप कहीं नोट कर रहे हैं आप लोग, तो बस ये देख लीजिए क्या क्या हेडिंग कैसे करते हैं. तो सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट, इट इज लाइक ए समरी ऑफ द पेपर. ये आप एंड में लिखते हो, लिखते हम सबसे पहले हैं, बट इसका जो ये चीज लिखी जो जाती है वो एट द एंड ऑफ पेपर लिखा जाता है, जब सब कुछ लिख लिया. बट पोजीशन इज एट द बिगिनिंग ऑफ द पेपर, राइट. ओके, आप कुछ कोटेशन भी दे सकते हैं. यू कैन टेक इट फ्रॉम संस्कृत, यू कैन टेक फ्रॉम एनी कोटेशन फ्रॉम एनी ऑथर, राइट. देन इंट्रोडक्शन, यू हैव टू स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक कि क्या है वो, राइट. एंड देन यू जस्ट राइट डाउन द डिफरेंट headings, subheadings. You can define it. You can write down little bit literature. Now, what is that literature? I just tell you. आप ध्यान से देखो, मैं जब लिख रहा हूं तो देखिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, हाईलाइट कर रहा हूं. आई होप इट इज विजिबल. मैं थोड़ा सा और इसको एनलार्ज कर देता हूँ. जस्ट होल्ड ऑन. या ओके, राइट. ओके, आई थिंक इट्स विल बी बेटर नाउ. देखिए बीच बीच में मैं ये ब्रैकेट में कुछ लिख रहा हूँ, राइट. जैसे मैंने एक लिखा है यहाँ पर, एक मिनट. Yes, the preference of such niche category of the tourist are indifferent to that of mass tourist in their pattern of consumption of tourism-led services, which has given a new reason for various tourism agencies to switch to new form of tourism. ये एक ऑथर ने ऑलरेडी लिखा था 2003 में.
मैंने उनका पेपर पढ़ा और अपने शब्दों में उनको समराइज करके यहाँ पे लिख दिया। नंबर 1 लर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू, जब आप रिसर्च, एकेडमिक रिसर्च करते हो तो आप अपने थॉट्स नहीं लिखते। गॉट इट? आप अपने थॉट्स नहीं लिखते बिकॉज दैट इज कॉल्ड बायसनेस। आपका पेपर बायस नहीं होना चाहिए। आप क्या करते हो, आप देखते हो कि पहले लोगों ने क्या कहा है, आप उसको लिखते हो। यू राइट इन योर लैंग्वेज बट यू जस्ट राइट कि लोगों ने क्या बोला है, और फिर उनका नाम यहां पर आप लिखते हो। ओके, और फिर लास्ट में हम इनका पूरा डिटेल देते हैं। अब ये चीज कहां से आई है, जस्ट होल्ड ऑन, मैं आपको बताऊंगा कि ये नाम कहां से आया, ये पेपर मैंने कहां से लिया। राइट, उसके बाद हम लोगों ने पूरा टूरिज्म रिस्ट्रक्चरिंग इन इंडिया किया, पूरा बताया कि फिर रियलिटी टूरिज्म को डिफाइन किया क्या होता है। राइट, स्लम टूर, बाइसिकल टूर, नाइट टूर, टोटल डिफाइन किया है। राइट, ओके, देन बेनिफिट्स फ्रॉम रियलिटी टूरिज्म। आप कोई भी, अगर आप जीएसटी के ऊपर लिख रहे हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। राइट, बेनिफिट फ्रॉम जीएसटी, जीएसटी की लाइक व्हाट वाज द स्टोरी बिहाइंड जीएसटी, व्हाट इज द जर्नी फ्रॉम सेल टैक्स टू बैक टू जीएसटी। राइट, देन बेनिफिट्स फ्रॉम जीएसटी। राइट, you can write down that thing. Then some data, आप डेटा भी कुछ उठा सकते हैं। Got it? Okay. देखिए, right? Next, research objective. 5वां हेडिंग आ गया रिसर्च ऑब्जेक्टिव। ओके, देन क्या आप उस पेपर में क्या करना चाहते हैं, देन रिसर्च मेथोडोलॉजी। अब जब हम रिसर्च मेथोडोलॉजी करते हैं तो 3 तरीके से पेपर लिखा जाता है। एक पेपर होता है एक्सप्लोरेटरी स्टडी। ओके, नाउ व्हाट इज एक्सप्लोरेटरी? जो पेपर मैंने आपके सामने लिखा है, आप जो देख रहे हो, दिस इज एक्सप्लोरेटरी स्टडी, केस स्टडी मेथड। राइट, आप क्या कीजिए, अपने भीलवाड़ा में अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो भीलवाड़ा की कोई 5 या 10 कंपनी उठा लीजिए, चाहे आप एसएमई उठा लीजिए या मिडिल कंपनी या स्मॉल कंपनी उठा लीजिए, लाइक, या लार्ज कंपनी उठा लीजिए। ओके, उनको एनालाइज कीजिए। बिफोर जीएसटी हाउ वाज द रेवेन्यू, इनका टैक्स का इंपैक्ट क्या था, आफ्टर रेवेन्यू उनका क्या है, देन उनका एक इंटरव्यू कीजिए एंड फाइंड आउट कि लोग क्या कहते हैं। आपको अपना थॉट्स नहीं लिखना है। गॉट इट? वो आर्टिकल कहलाता है एकेडमिक रिसर्च में, हाउ यू आर गेटिंग द डेटा फ्रॉम अदर्स, आप उसको कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड केस स्टडी अप्रोच। राइट, सो देखिए हमने क्या किया, देन केस स्टडी अप्रोच। मैंने ये केस स्टडी लिखा। हम लोग गए, मुंबई गए थे, धारावी आप जानते हैं, मुंबई की सबसे बड़ा स्लम एरिया है। वहां पे हम लोगों से मिले, उनसे मिले जो टूरिस्ट घूमने आ रहे हैं, हम उनसे मिले, हमने उनसे बातचीत की, उनका रिकॉर्ड किया और उसको एक कहानी के रूप में लिखा। एक बंदा था, मतलब एक पर्सन था, रिचर्ड नाम का। ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ टूरिज्म कोर्स, पीजी कर रहा था, पोस्ट ग्रेजुएशन। वो यहाँ पर आया था अपना प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करने, तो हमने उसका एक इंटरव्यू लिया और उसको कहानी में लिख दिया अपने शब्दों में। तो देखिए केस स्टडी बन गया ये। राइट, ब्यूटीफुल केस स्टडी। आप लोग कभी ये पढ़ सकते हैं पेपर, आपको मैं शेयर करूंगा। इट इज जस्ट लाइक ए स्टोरी कि आप कैसे कहानी लिख रहे हो। राइट, छोटा सा बताऊंगा, यहां से शुरू करता हूं। आई एम रिचर्ड, रिसर्च स्कॉलर ऑफ सोशल साइंस फ्रॉम सिंगापुर, रिसेंटली विजिटेड टू धारावी, आई हैव बुक्ड ए टूर ऑनलाइन, लाइक दैट। देख रहे हो आप, पूरी कहानी है ये, बहुत इजी होता है लिखना। ओके, राइट, देन फाइनली आप 3 केस स्टडी मैंने इसमें लिखी है, केस स्टडी 3 पूरी इंडिया की है। एंड फाइनली हमने क्या किया, उनको एनालाइज करना शुरू किया। दिस इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरिएबल्स, कैसे उनको हमने एनालाइज किया एंड फाइनली एक मॉडल बनाया। मॉडल बनाओगे ना आप लोग, जीएसटी का भी बना सकते हो। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, राइट, कहाँ से टैक्स कलेक्शन होता है, फिर ये टैक्स कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्या क्या बेनिफिट होता है, हाउ इट इज सेग्रीगेटेड टू स्टेट एंड सेंट्रल। तो आप एक अपना मॉडल खुद का ओरिजिनल क्रिएट कर सकते हो। रिमेंबर, इस मॉडल को आप कॉपीराइट कर सकते हो, मॉडल, राइट। ओके, लाइक दिस। एंड फाइनली थोड़ा सा हमने डेटा दिखा दिया एंड वी हैव सिंपली कंक्लूडेड। तो देखिए छोटा सा पेपर था ये, राइट। अब हम आते हैं दूसरा पेपर। ये था प्योर मैथमेटिकल बेस्ड पेपर, रीडिफाइनिंग इंडियन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स, स्टडी ऑन पोस्ट ब्रिक्स सिनेरियो। आप जानते हैं ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, राइट। ये एक इनका ग्रुप बना है। और ब्रिक्स के पहले और ब्रिक्स के बाद भारत के एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे क्या इंपैक्ट पड़ा इन देशों के लिए। जैसे ही ब्रिक्स बना तो भारत का
जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट था इन कंट्रीज पे क्या इंपैक्ट आया, तो हमने वो एनालाइज किया है, राइट। तो देखिए एब्स्ट्रैक्ट लिखा, ये पेपर बड़ा अच्छा एक जर्नल में पब्लिश हुआ था, एनएमएस जर्नल ऑफ इकोनॉमिक एंड पब्लिक पॉलिसी 2019 का पेपर है, राइट। फिर हमने देखिए एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन क्या होता है, इंसेप्शन ऑफ ब्रिक्स, ओके, देन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिक्स, पूरा रिसर्च ऑब्जेक्टिव। फिर हमने डेटा उठाया, डेटा कहां से उठाया, आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, राइट, कि रियल जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना की 2019 तक का। फिर रियल जीडीपी ग्रोथ रेट ब्रिक्स नेशन का उठाया, एंड फाइनली हमने ट्रेड डिफिसिट और उनका कौन कौन से फैक्टर हैं उनको हमने एनालाइज किया। कौन कौन से फैक्टर उठाए हमने जो इंपैक्ट कर रहे हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट को, जीडीपी, एफडीआई इनफ्लो, एक्सचेंज रेट, पॉपुलेशन, इन्फ्लेशन। और ये देखिए मैंने नहीं उठाए, हमने क्या किया, हमने दूसरे पेपर से हमने एक्सट्रैक्ट किए, वी हैव टेकन रेफरेंस फ्रॉम अदर पेपर। मैं फिर बोल रहा हूं ये लाइन, आप अपना कुछ नहीं करते, आप दिखा ओके कि आप दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, आप वहां से थोड़ा थोड़ा हर पेपर से उठा लेते हो, ओके, बट यू डू योर ओरिजिनल एनालिसिस, राइट। तो देखिए हमने इनका जयचंद्रन का पेपर पढ़ा, वहां से हमने देखा कि एफडीआई इनफ्लो जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को इंपैक्ट करता है, तो हमने ये ले लिया। फिर हमने क्या किया, भारत का जीडीपी, एफडीआई, एक्सचेंज रेट, पॉपुलेशन, इन्फ्लेशन लिया लास्ट फ्यू इयर्स का, देखिए फ्रॉम 2006 टू 2015, ये हमने मैक्रो वेरिएबल डेटा लिया भारत का, और फिर हमने इंपैक्ट किया कि अब ये कुछ इंपैक्ट आता है। सिंपल हमने क्या किया, इसमें रिग्रेशन लगा दिया, मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस, एंड ब्यूटीफुल पेपर हमारा यहाँ पर निकल के आता है, और निकल के आया कि ये कुछ फैक्टर इंपैक्ट करते हैं हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट को, कुछ फैक्टर इंपैक्ट नहीं करते, राइट। बहुत थर्ड पेपर, दिस वाज अबाउट रूरल एरिया, ओके, कि मार्केट, ये थोड़ा सा मेरा मार्केटिंग का फील्ड है बट फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ कि रिटेल ऑपरेटिंग मॉडल्स इन इंडियन एग्री बिजनेस सेक्टर, जो भारत के किसान हैं वो कैसे रिटेल कर रहे हैं अपना प्रोडक्ट। आजकल बड़ी लड़ाई चल रही है पंजाब में, तो पंजाब में मैं तो यहाँ देखता हूँ, ये हमने बहुत पहले लिखा था, ओके, मतलब ये फॉर्म लॉ से पहले आई हैव रिटन दिस पेपर, कि जो किसान है भारत के वो अपना माल रिटेल कैसे करेंगे, ओके, तो ये पेपर उस पर लिखा गया था। तो ऑलरेडी मार्केट में ये काफी सारे लोगों ने कर ही लिया है, टाटा भी मार्केट में है, आदित्य बिरला भी मार्केट में है, रिलायंस भी मार्केट में है, ऑलरेडी दे आर देयर इन रूरल एरिया, और उनका रूरल एरिया का जो बिजनेस है दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अर्बन एरिया। राजस्थान में तो बहुत फेमस है इन चीजों का, ओके, सो लाइक दैट सो मेनी नेम्स आर देयर, राइट, ओके। तो मैं वापस आऊंगा, तो आपने देखा ये 3 पेपर हम लोगों ने पढ़े अभी, राइट। आई थिंक यू नो कि हम पेपर कैसे लिखते हैं, राइट। देखो आई एम श्योर आप लोगों ने अगर लिखा होगा तो यही चीज लिखी होगी, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन लिटरेचर रिव्यू, देन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च हाइपोथेसिस, रिसर्च फ्रेमवर्क, रिसर्च मेथोडोलॉजी, डेटा एनालिसिस, फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ओके, प्लीज टेक इट। यही हमें पेपर में लिखना होता है, और सबसे ऊपर यहां पर हम डालते हैं एब्स्ट्रैक्ट, वो लास्ट में लिखा जाता है बट उसकी पोजीशन यहां पर होती है, दैट इज लाइक ए समरी, ओके। नाउ हाउ टू स्टार्ट, कैसे शुरू करें, ठीक है। तो डेफिनेशन है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, आई हैव डिफाइंड बिजनेस रिसर्च, अनुज सर ने काफी अच्छा समझा दिया था कि बिजनेस रिसर्च क्या होता है, राइट। कोई भी एक टॉपिक है, आप लोग उसको उठा लेते हैं, राइट, एंड देन यू जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या मैं उस पर स्टडी कर सकता हूँ। बस आपका आंसर चाहिए, कोई एक दो लोग बोल सकते हो, क्या एग्जिट पोल्स हमेशा सच होते हैं? एनी वन ऑफ यू? कुछ कुछ टाइम पे होते हैं सर, बाकी तो क्यों नहीं होते एग्जिट पोल, सच क्यों नहीं होते हैं, कोई आइडिया? अक्सर 90% केसेस में एग्जिट पोल्स गलत प्रूव हो जाते हैं, क्यों? कुछ दिमाग लगाइए, ऐसा क्यों होता है? एग्जिट पोल जनरली गलत क्यों प्रूव हो जाते हैं? एग्जिट डेटा नहीं आता हमारे पास, सोचिए कैसे करते हैं ये, जितने भी किसी को कोई बोलना चाहे तो। जनरल रिसर्च करके एग्जिट पोल होते हैं, और ये एक टेंटेटिव डेटाबेस पे होते हैं, तो
मे बी डिफर कि वो क्या बेसिस ले रहे हैं और एक्चुअली क्या है। ओके, गुड निर्वीक जी, एक आंसर और आपने शायद कोई बताए। हाँ, पूरा जो डाटा है वो सारे पब्लिक को कवर नहीं करते हैं, वो केवल एक सैंपल साइज को सेलेक्ट करते हैं, उसी के अंदर से वो रिजल्ट निकालते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसका रिजल्ट पूरे ओवरऑल सर्कल, ओवरऑल पॉपुलेशन का जो रिजल्ट है वो क्यों हो बराबर। वेरी वेरी गुड, यही चीज समझ लीजिए। अगर आपको अच्छा रिसर्चर बनना है तो आपको बस एग्जिट पोल ही करना है। आप पूरी दुनिया से डेटा इकट्ठा नहीं कर सकते, करेक्ट। आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइमरी डेटा है। सेकेंडरी डेटा तो ठीक है, आप मार्केट में है, आपने एनालाइज किया, भारत की जीडीपी निकाली 10 ईयर की, एक्सपोर्ट इंपोर्ट निकाल लिया। बट अगर मैं प्राइमरी डेटा की बात करता हूँ तो आप हर एक से इकट्ठा नहीं कर सकते। भारत की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, नहीं कर सकते आप इकट्ठा। तो आप क्या करते हो, कुछ ही लोगों से डेटा इकट्ठा करके उसको एनालाइज कर लेते हो सकता है कि आपका डेटा कुछ गलत आए, बट डोंट फियर आउट, ये आपकी एक लिमिटेशंस है, राइट। इसलिए एग्जिट पोल वाले कभी नहीं कहते कि हमारा डेटा गलत है, वी आर सॉरी, नहीं कहते। वो साफ कहते हैं। एग्जिट पोल क्या करता है, वो एक सैंपल, जैसे निर्भीक जी और संतोष जी ने बताया कि वो एक छोटे से डेटा पे स्टडी करते हैं। वो भीलवाड़ा जाएंगे, भीलवाड़ा से 100 लोगों से पूछ लेंगे बस। वो 100 लोग यहाँ से उठाए, 100 लोग जयपुर से उठाए, 100 लोग जोधपुर से उठाए, वहां से डेटा उनसे पूछा किसको वोट दिया आपने, बस उसके बेस में पूरे राजस्थान को प्रेडिक्ट कर देते हैं, राइट। तो पूरे बट दैट्स इट, यही होता है। सेम थिंग वी डू आल्सो। हम जब अपना रिसर्च करते हैं तो हम हर एक से डेटा नहीं लेते, हम सोच लेते हैं कि चलो 100 लोगों से 200 लोगों से इकट्ठा कर लेंगे, एक क्वेश्चनर बनाएंगे, डेटा इकट्ठा करके एनालाइज करके वी विल एनालाइज द एंटायर पॉपुलेशन। तो दिस इज द बेस ऑफ द स्टैटिस्टिकल टूल कि जब हम डेटा एनालाइज करते हैं तो हम एक सैंपलिंग करते हैं। ओके, जस्ट होल्ड ऑन कि कैसे करते हैं ऐसा। ओके, चलिए नाउ टाइप की बात करते हैं, बेसिक रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च। ओके, जनरली हम लोग बेसिक रिसर्च करेंगे। ओके, बेसिक रिसर्च में क्या होता है, आई वांट टू एनालाइज व्हाट इज जीएसटी, रियलिटी टूरिज्म क्या होता है, दैट्स इट। उसका इंपैक्ट क्या आया, वो आ जाएगा अप्लाइड रिसर्च, वो आ जाएगा अप्लाइड रिसर्च। क्या वाकई जीएसटी के आने से कुछ इंपैक्ट पड़ा, राइट। तो ये अप्लाइड रिसर्च जाएगा। तो डिपेंड्स ऑन यू, आप केवल 2 ही पेपर लिखोगे फ्यूचर में, या करते हैं डिफरेंट मेथड्स होते हैं, लॉजिकल, इवैल्यूएशन, इन्वेस्टिगेटिव, डेमोग्राफिक, मोडस ऑपरेंडी एंड एम्पिरिकल। मेजॉरिटी ऑफ अस वी विल गो फॉर थर्ड एम्पिरिकल पेपर। एम्पिरिकल क्या होता है, डेटा के बेस पे। आई एम श्योर आप लोग इतना तो जानते हैं, सेकेंडरी डेटा एंड प्राइमरी डेटा। डेटा 2 तरीके का है। सेकेंडरी जो मार्केट में अवेलेबल है, आपने गूगल पे सर्च किया, आईएमएफ की वेबसाइट पे गए, राइट, आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट पे गए, लास्ट 20 इयर्स का डेटा निकाल लिया, एक्सेल में डाउनलोड कर लिया, दैट इज सेकेंडरी डेटा। बट अब आपको चाहिए कि लोग क्या सोच रहे हैं। ओके, देन आप एक क्वेश्चनर बनाते हो, लोगों के पास जाते हो, उनसे इंटरव्यू लेते हो, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। ओके, तो अगर उसके बेस पे कुछ रिसर्च हो रही है, दैट इज कॉल्ड एम्पेरिकल। तो जो हमारी फील्ड है, ओके, सोशल साइंस, कॉमर्स, अकाउंट्स, ओके, ये सारा का सारा आता है एम्पेरिकल, सब कुछ इसी में आता है। वो दे कम हियर, मोडस ऑपरेंडी, फॉरेंसिक, मेडिकल डायग्नोस्टिक, राइट, वो उनकी अलग तरीके की रिसर्च हो जाती है। डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, सेंसस, ये हम नहीं करते। ओके, दिस इज इंडियन गवर्नमेंट। ओके, आजकल बड़ा चल रहा है कि जातिगत बेस पे जनगणना होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तो दैट इज डेमोग्राफिक इशू। ये हम थोड़ा सा करते हैं अपनी रिसर्च में, कैसे करते हैं बता दूंगा। इन्वेस्टिगेटिव, लॉ, गवर्नमेंट हियरिंग, जर्नलिज्म, ये भी हम नहीं करते, राइट। इवैल्यूएशन नो, लॉजिकल नो, नहीं करते। हम केवल एम्पेरिकल रिसर्च ही करेंगे। मेजॉरिटी ऑफ अस, आप फ्यूचर में कभी रिसर्च करोगे तो एम्पेरिकल रिसर्च ही करोगे। क्यों? क्योंकि दिस इज बेस्ड ऑन डेटा, न्यूमेरिकल डेटा, मैथमेटिकल डेटा। ओके, राइट। चलिए नेक्स्ट पार्ट, अब देखिए कि क्या ये केवल एकेडमिक रिसर्च ही करें, क्या इसका कुछ फ्यूचर है, क्या इसमें कुछ पैसा है जी सर, आप यकीन नहीं करेंगे कितना पैसा है इस फील्ड में। कंपनीज आर अर्निंग इन बिलियंस जस्ट बाय डूइंग रिसर्च। आई एम श्योर आप लोग भी इसमें एक्सपर्ट ही हो जाता था। नीलसन, this is the largest company in the research, they do all type of research,
आप न्यूज़पेपर में देखते हैं सब डेटा, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, उनका फ्रंट पेज पे कुछ ना कुछ वो डेटा देते रहते हैं कि भारत में रिफाइंड ऑयल का ये डेटा है, या पिछले 10 साल में उनको ये बीमारी, काफी सारा वो अक्सर डेटा देते हैं. Majority of the data, 90% data comes from this company, Nielsen, and they charge a very good amount from these newspapers, from these different magazines. Even different governments of different nations, they take the help of this company for some research. So, अगर आपके यहाँ कोई younger brother, sister या कोई भी है, तो it's a good field. Okay, आप वो अगर उनका थोड़ा सा भी मैथमेटिक्स स्ट्रांग है, स्टैटिस्टिक्स स्ट्रांग है, तो इसको एक एज ए करियर वो अडॉप्ट कर सकते हैं किसी भी फील्ड में. ओके, चाहे वो बीकॉम कर रहे हो, एमकॉम करें, सीए करें, एमबीए करें, किसी भी फील्ड में, बट उनको स्पेशलाइजेशन रिसर्च में लेना है. इट्स अ वेरी गुड फील्ड, बहुत मार्केट में डिमांड है. आज मैं अभी आपको बताऊंगा लास्ट में, वर्ल्ड टॉप R&D स्पेंड देखें तो अमेजन सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है R&D में. रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इट डजंट मीन ओनली डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, इट मीन्स रिसर्च. लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों की प्राइवेसी तो खराब नहीं हो रही. ओके, आरबीआई नॉट डिस्ट्रॉइंग द प्राइवेसी. गूगल, अमेजन, अल्फाबेट इज द अनदर कंपनी, इट इज द गूगल कंपनी, ओके, राइट, parent company. So Amazon and Alphabet, Google, they are spending maximum money in the research. Okay, look, Indian marketing research firm, I think I told you, okay, Nielsen is the number one. Now these are the different research firm, there are different career options. Okay, different career options. Questions का भी छोड़ देते हैं, right? Okay, next start करते हैं second part. So I think you know what is the research here, और हमें क्या लिखना है. अब कैसे करें, क्वेश्चन आपका आएगा कि ठीक है सर समझ में आ गया, अब करें कैसे. तो देखिए, सबसे पहले तो प्रोसेस देखिए. सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, कोई एक प्रॉब्लम देख लो, राइट. देन रिव्यू ऑफ लिटरेचर आ गया, राइट. नाउ व्हाट इज रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जस्ट होल्ड ऑन. देन हाइपोथेसिस एंड मॉडल बिल्डिंग, रिसर्च डिजाइन, देन डेटा कलेक्शन, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा एनालिसिस एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, देन डिस्कशन, राइट. नाउ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, प्रॉब्लम कहाँ, क्या करें सर, टॉपिक कैसे आए, यही समझ में नहीं आता. तो देखिए, मैं आपको तीन देता हूँ, तीन एग्जाम्पल दे रहा हूँ. क्या हुआ, आपने देखा होगा, आप में से किसी का फ्रेंड सर्किल सिगरेट पीते हैं, ड्रिंक करते हैं. अब उस पर एक मैसेज लिखा होता है, राइट. लिखा होता है ना, स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ, ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग कॉजिंग कैंसर. डज इट इम्पैक्ट द स्मोकिंग हैबिट. उसमें बड़ा सा अजीब सा फोटो भी बनाते हैं सिगरेट के पैकेट पे. ओके, जितने अल्कोहलिक ड्रिंक होती हैं उनकी बॉटल होता है, राइट. डज इट इम्पैक्ट, क्या वो मैसेज का सच में कुछ इम्पैक्ट है या ऐसे ही दिया हुआ है, राइट. इट्स अ ब्यूटीफुल टॉपिक, इम्पैक्ट ऑफ वार्निंग मैसेजेस ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स ऑन क्विट इंटेंशन. क्या उन मैसेज को पढ़ के लोग कहते हैं नहीं, आई थिंक आई शुड क्विट द स्मोकिंग, आई शुड क्विट द ड्रिंकिंग. इट्स अ वेरी सोशल टॉपिक, बट इट्स अ ब्यूटीफुल टॉपिक, राइट. तो आप क्या करेंगे इस टॉपिक को पढ़ के, आप पढ़िए, राइट. पहले सोचो, लोगों से बातचीत करो, सबसे पहले दोस्तों से बातचीत करना शुरू करो, क्या होता है, क्या आइडिया है. देन ऑल अबाउट वार्निंग में, फिर आप लीगल थोड़ा सा पढ़िए, लॉ पढ़िए, क्या लॉ है भारत में, क्यों ये सारी की सारी कंपनी ऐसे फोटो छाप प्रिंट करती हैं उन पैकेट्स पे, कितना एज पर द लॉ 80% जो सिगरेट पैकेट का कवर है वो कवर होना चाहिए इन पिक्चर्स और मैसेज से. ओके, फिर सेकेंडरी डेटा निकालिए, कितने लोग स्मोक करते हैं, कितने लोगों की डेथ होती है, राइट, लाइक दैट, मेल फीमेल. फिर स्मोकिंग हैबिट देखिए, फिर देखिए क्या बाकी इसका इम्पैक्ट पड़ता है. एक क्वेश्चनर बनाइए, क्या लोगों ने इस पर पहले काम किया है, ओके, वो क्या कहते हैं. तब आप अपना एक क्वेश्चनर बनाइए, लोगों से डेटा इकट्ठा कीजिए, पूछिए भाई ऐसा क्या है, क्या बाकी आप ध्यान देते हो. देन यू जस्ट कंक्लूड योर पेपर, है ना. ओके, कम टू अनदर टॉपिक, इम्पैक्ट of GST in easing the business for SSI, small scale industry. कर सकते हो. I think I told you all about GST, VAT, ST, journey of GST, why implemented, legal requirement, what issue and challenges. ये प्योर थ्योरेटिकल केस स्टडी बेस्ड पेपर हो जाएगा. ओके, अनदर आइडिया, अनयूजुअल परचेजिंग बिहेवियर ड्यूरिंग द लॉकडाउन स्टेजेस ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक. याद है आपको, जब हम लोग लॉकडाउन में बंद थे तो हमारा परचेजिंग पैटर्न क्या था, कैसे खरीदारी कर रहे थे हम लोग डर गए थे, राइट. जहां से जो मिल रहा था हम बल्क में परचेज कर रहे थे. आलू 15 किलो दे दो, पता नहीं मिले ना मिले. मतलब एक अनयूजुअल परचेजिंग पैटर्न आ गया था मार्केट में. किसके, जो हमारे बगल में शॉप है जिसमें हम कभी नहीं जाते थे, वो हमारे लिए रिलायबल हो गई थी. फोन कर दिया, घर पे पहुंचा दिया.
या रात को चुपके से निकलते थे गलियों में, गली घुसते हुए और उस दुकान से जाके लेते। तो हमारा जो परचेजिंग पैटर्न था वो बड़ा चेंज हो गया था। मेजॉरिटी ऑफ अस बी रिलायबल ऑन लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। तो एक परचेजिंग पैटर्न हमारा चेंज हो गया था, याद है? राइट, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल बी एग्री। तो क्या हम इस पे कर सकते हैं स्टडी? क्यों हुआ, क्या फर्क पड़ा, क्या? आज देखो, आज हम सब फोन पे यूज करते हैं, गूगल पे। आई एम श्योर आजकल हम मार्केट में जाते हैं तो बहुत कैश रखना तो कम कर दिया है। आप कभी मेरी यूनिवर्सिटी आए, हम लोग कभी कैश नहीं रखते। अब सीधा एवरी शॉपकीपर जो हमारे यहाँ जालंधर में भी, आई एम लिविंग इन जालंधर राइट नाउ, एवरी शॉपकीपर, आई एम श्योर इन आपके यहाँ भी है भीलवाड़ा, राइट? ठेला वाला कभी सोचा था कि एक सब्जी वाला आके कहता है कि मैडम गूगल पे कर दीजिए? तो क्या इम्पैक्ट, क्या वाकई कोविड-19 का था? क्या वहां से हम लोगों ने सीख लिया ये चीज, या ये मोदी सरकार ने जो नोटबंदी की थी उसका भी असर है? तो आप सोचो कि कहां से ये हैबिट आई है, क्या इस पर कुछ एक रिसर्च की जा सकती है? राइट? तो देखिए, व्हाट इज परचेजिंग बिहेवियर, इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19, लिटरेचर रिव्यू, फैक्टर्स इम्पैक्ट। तो देखिए, टॉपिक जो फर्स्ट मैं आपको बता रहा था, ओके, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। ये तो आप मार्केट जाएंगे, बच्चों से बातें करेंगे, घर पे डिस्कशन करेंगे, पापा मम्मी से डिस्कस करेंगे, दोस्तों से डिस्कस करोगे, अखबार पढ़ोगे, ऑब्जर्व करोगे, आपको खुद दिमाग में आ जाएगा यार ऐसा कर सकते हैं, ये टॉपिक पे हम रिसर्च कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम इज ऑल अराउंड यू, है ना? बस आप देखिए क्या इस पे रिसर्च पॉसिबल है। मैंने भी आपको 3 आइडियाज दिए अभी केवल, बाकी तो आप, आई थिंक यू आर बेटर देन, राइट? नाउ कम टू सेकंड पार्ट। अब क्या करें, कैसे आगे बढ़ें, है ना? रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है? तो देखिए, टॉपिक तो आ गया, अब उसको आप पढ़ना शुरू करो। आप पढ़ोगे तो कैसे? 2 तरीके से स्टडी करोगे आप, या तो आप एक्सप्लोरेटरी करोगे, राइट, या फिर आप डिस्क्रिप्टिव करोगे। नाउ व्हाट इज एक्सप्लोरेटरी, राइट? ओके, इसमें आप क्या करते हो, यू डोंट कलेक्ट डेटा, आपको लोगों से डेटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप बस, दिस इज बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन, ओके, सर्वे ऑफ एक्सपर्ट, पायलट सर्वे, सेकेंडरी डेटा एनालिसिस, क्वालिटेटिव रिसर्च, केस स्टडी, राइट? आपने क्या किया, पूरा का पूरा डेटा उठा लिया। जीएसटी, जैसे जीएसटी वाला टॉपिक है, इट इज एक्सप्लोरेटरी स्टडी, इट इज नॉट डिस्क्रिप्टिव एट ऑल। आप पूरा का पूरा डेटा डाउनलोड कर लीजिए, पिछले 10 साल का, आफ्टर जीएसटी एंड बिफोर जीएसटी, कंपेयर कीजिए, क्या इम्पैक्ट पड़ा है? अगर पड़ा है तो फिर क्या रिलेशन है, क्या मैं उसको एक मैथमेटिकल दे सकता हूं, उसको एनालाइज कीजिए। सो दैट इज कॉल्ड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, राइट? सर्वे ऑफ एक्सपर्ट, लोगों से बातचीत कीजिए। एक्सपर्ट मींस मैनेजर्स, एमिनेंट स्कॉलर इन दैट फील्ड। पायलट सर्वे मींस आप खुद जाइए, लोगों से बातचीत कीजिए, दैट इज द सेम थिंग। सेकेंडरी डेटा मैंने आपको बताया, क्वालिटेटिव रिसर्च, हाउ यू एनालाइज दैट, एंड फाइनली केस स्टडी, यू राइट द केस स्टडी। केस स्टडी मींस लोगों से बातचीत की और एक कंपनी ले ली, मान लीजिए एबीसी फर्टिलाइजर्स, उनके पास गए, आपके अच्छे फ्रेंड की थी, आप गए, आप उसके पास बैठे 3-4 दिन, आपने बातचीत की, उससे पता लगाया कि पहले वो क्या करता था, अब क्या करता है, क्या अकाउंटिंग सिस्टम में कोई फर्क आया, क्या अकाउंट मेंटेनेंस में कुछ फर्क आया, राइट? क्या रेवेन्यू पे कुछ फर्क हुआ, एक्सपेंडिचर पे कुछ फर्क हुआ, डिफरेंट कौन कौन से लीगल टर्म्स उसको सीखने पड़े, क्या न्यू सॉफ्टवेयर उसको अडॉप्ट करना पड़ा, क्या उसने न्यू ट्रेनिंग लेनी पड़ी, क्या हुआ, राइट? तो देखिए, एक मैं आप कुछ नया नहीं बता रहा, आप लोग जानते हैं, बट आपको कैसे लिखना वो मैं आपको बता रहा हूं। तो आप ब्यूटीफुली इस पेपर को आप लिख सकते हो इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ओके, नाउ कम टू सेकंड पार्ट। आपका तो नहीं सर, इसमें मजा नहीं आ रहा। मैं चाहता हूं कि मैं एक डिस्क्रिप्टिव स्टडी करूं, लोगों से बातचीत करूं, और एक प्राइमरी डेटाटिव रिसर्च। आपने क्या किया, आप एक अपना क्वेश्चनर बनाओगे। जैसे मान लीजिए आप इम्पैक्ट करना चाहते हो कि लोगों के परचेजिंग पैटर्न पे इम्पैक्ट क्या पड़ा। आपने क्वेश्चनर बनाया कि भाई पहले आप जब पेमेंट करते थे तो कैसे करते थे, आप कैसे करते हो, आपने यू हैव गिवन सम आंसर्स ऑलरेडी, उसको एक टिक करना है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा अभी, राइट? सो लाइक दैट, तो आप डिसाइड कर लिया कि आपको क्या करना है, कौन सी रिसर्च करनी है। आफ्टर दैट यू गो फॉर रिव्यू ऑफ लिटरेचर, सेकेंड स्टेप। ओके, नाउ व्हाट इज दैट इज literature review important part. It is the backbone of the research. Without this आप आगे नहीं बढ़ सकते। लिटरेचर रिव्यू कहता है कि भाई आपसे पहले क्या किसी ने इस टॉपिक पर रिसर्च किया है, या आप बिल्कुल नई चीज कर रहे हो। नई चीज तो नहीं होती, आप मान के चलिए
you will not get any total new topic. Related topic पे किसी ने रिसर्च की हो, अगर आप कहते हो कि सिर्फ जीएसटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में बहुत लोगों ने पढ़ लिया, कोई बात नहीं। क्या भीलवाड़ा में किसी ने पढ़ा? नहीं ना। हो सकता है वो स्टडी गुजरात में हुई हो, वो स्टडी पंजाब में हुई हो सकता है भीलवाड़ा के लोगों की थिंकिंग अलग हो, राइट? मीन समथिंग न्यू, आप लोग कुछ नया कर रहे हो, यू आर एडिंग समथिंग। Maybe that study has been done in Delhi or in Gujarat or in South India. आपके यहाँ थोड़ा अलग मेथड है, राइट? मारवाड़ी लोग हैं और उनका एक थिंकिंग अलग होता है, पर्पज अलग होता है बिजनेस करने का, राइट? तो मीन्स कुछ नया आप करोगे। सो डोंट थिंक कि सर ये टॉपिक तो बहुत रिसर्च हो चुका है, कोई बात नहीं। बट लिटरेचर में आप वही देखते हो कि लोगों ने क्या रिसर्च किया, राइट? आपने क्या करते हो, इसके लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले एक वेबसाइट आती है, please note down all of you. Google Scholar. सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी थोड़ी सी। ओके, आई थिंक नेटवर्क इशू, वॉइस ब्रेक हो रही है। जस्ट होल्ड ऑन, इट इज कमिंग। अच्छा, आज थोड़ा सा ना मैं मोबाइल के नेट से काम चला रहा हूँ, तो इट्स वर्किंग प्रॉपर्ली। अभी भी ब्रेक। ओके 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 ओके। देखिए एक साइट है गूगल स्कॉलर। दिस इज द वन ऑफ द परफेक्ट सोर्स फॉर द लिटरेचर। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, ओके, इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी ऑन, ओके, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, दैट्स इट। देखिए कितने लोगों ने ऑलरेडी लिखा हुआ है इसमें, राइट? ए स्टडी ऑफ इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी आफ्टर इट्स इम्प्लीमेंटेशन, इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी ऑन एमएसएमई, जीएसटी एंड इम्पैक्ट ऑन स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेज, कंप्लायंस कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कोई भी आप एक पेपर उठा लीजिए, कोई भी एक पेपर खोल सकते हैं। मान लीजिए ये पेपर आपने ओपन किया, क्लिक कीजिए इस पे, ओके, दिस पेपर विल कम, राइट? ओके, देखिए पढ़िए उसने क्या लिखा है। मिलनदीप कौर, काजल चौधरी, सुरजन सिंह, बलजिंदर कौर, दे हैव रिटन दिस पेपर। देखिए हाउ दे हैव रिटन, व्हाट दे हैव रिटन, उसको बस आपको पढ़ना, अपने शब्दों में उसको समराइज कर देना। दिस इज कॉल्ड लिटरेचर रिव्यू। इस पूरे पेपर को पढ़ना है और फिर इसको समराइज कर देना है एक पैराग्राफ, राइट? क्लियर हुआ कि ये वाला जो पेपर है मैंने कहां से लिया? गूगल स्कॉलर की वेबसाइट से। दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल सोर्स एंड परफेक्ट सोर्स फॉर द लिटरेचर, राइट? ओके, नाउ कैसे लिखते हैं लिटरेचर रिव्यू, आप कैसे लिखेंगे, राइट? ओके, देखिए पैराग्राफ वाइज लिखा जाता है, राइट? पैराग्राफ में आप लिखोगे इसको, टाइटल ऑफ पेपर, ऑथर, जनरल, टाइम, समरी ऑफ पेपर, रिसर्च ऑब्जेक्टिव, वेरिएबल्स आइडेंटिफाइड। ये पैराग्राफ वाइज आप में लिख लेते हो कि कैसे मुझको एक वन पैरा के अंदर उसको लिखना है। दिस इज लिटरेचर रिव्यू। अगर आप लोग पीएचडी कर रहे हैं कोई, तो आई थिंक ये लिटरेचर रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको कैसे लिखना है। ओके, फाइनली, ओके, अब लिट कर क्यों रहा हूं, तो इसको हम करते हैं कि लोगों ने क्या स्टडी की और कौन से वेरिएबल आइडेंटिफाई किए। ओके, ये वाला जो टॉपिक है, राइट? ये जो आपको दिख रहा है वेरिएबल्स आइडेंटिफाई, ओके, ये जो मैंने अभी हाईलाइट किया वेरिएबल्स आइडेंटिफाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे मुझे पता चलता है कि लोगों ने किस टॉपिक पे स्टडी की है, उस जीएसटी में भी उन्होंने क्या क्या चीजें स्टडी की है, कौन कौन से फैक्टर ने इंपैक्ट किया लोगों को। दैट इज कॉल्ड वेरिएबल्स आइडेंटिफाइड। ओके, आफ्टर दैट आप क्या करते हो, अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव बना लेते हो, मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करते हो, एंड देन यू जस्ट इन मेथोडोलॉजी फर्स्ट यू आइडेंटिफाई कि मुझे क्या सैंपल टेक्निक क्या है, मैं डेटा किससे कलेक्ट करूंगा, क्या मैं केस स्टडी बेस लिखूंगा या मैं सबके पास जाऊंगा, एक एक क्वेश्चन भरवाऊंगा, 20 कंपनी ले लेता हूँ, 20 कंपनी के मैनेजर से भरवा लूंगा, राइट? तो आप डिसाइड करते हो कि आप किस तरीके से आप सैंपलिंग करोगे, राइट? ओके, फाइनली आप जब आपके पास डेटा इकट्ठा गया, आप आए घर पे बैठे, आपने वो पेपर पढ़े और उसको आपने एक्सेल में डेटा डाउनलोड कर लिया।
राइट? एंड देन फाइनली आप क्या करते हो, यू जस्ट हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हो. नाउ व्हाट इज हाइपोथेसिस, मैं आपको बता रहा हूं, मैं लिख रहा हूं कुछ, आप ध्यान से देखिएगा. व्हाट इज हाइपोथेसिस? ओके, हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट होता है, राइट? जैसे मैंने बोला कि इनकम हैज इंपैक्टेड ड्यूरिंग द कोविड-19, और इसने क्या किया, इनकम था, इनकम एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था, इनकम हैज इंपैक्टेड ड्यूरिंग कोविड-19. परचेजिंग पैटर्न, ओके, परचेजिंग पैटर्न इंपैक्ट हुआ हमारा, प्लस हमारा कंजम्पशन इंपैक्ट हुआ, कंजम्पशन भी इंपैक्ट हुआ हमारा ड्यूरिंग कोविड. ये देखिए वेरिएबल्स आ गए मेरे लिटरेचर रिव्यू से, इनकम आ गया, परचेजिंग पैटर्न आ गया, कंजम्पशन आ गया, प्लस उसके बाद क्या हुआ, प्लस हैव बी फोकस ओनली ऑन डेली नीड प्रोडक्ट, ये हमने ज्यादा यूज किया. वाइल जो लग्जरी प्रोडक्ट थे, LUXU लग्जरी प्रोडक्ट थी, इनकी डिमांड कम हो गई, राइट? लग्जरी प्रोडक्ट थे, इनकी हमने डिमांड कम कर दी. देखिए ऑटोमोबाइल्स की सेल एकदम डाउन हो गई, नहीं खरीदे लोगों ने, बोले भैया जरूरी नहीं है, राइट? गोल्ड, सिल्वर, ऑर्नामेंट्स, एवरीथिंग स्टॉप्ड. डेली नीड प्रोडक्ट. तो क्या, अब मुझे हाइपोथेसिस बनाना है, तो मैं एक सिंपल सा स्टेटमेंट बनाता हूं, क्या कि राइट, देयर वाज नो इम्पैक्ट ऑफ COVID-19 on purchasing pattern, on purchasing pattern towards daily need product, daily need product. ये देखिए, ये मेरी जो एक बनी है, ये मेरी फर्स्ट हाइपोथेसिस बन गई. ये मैंने अपने मन से नहीं बनाई है, मैंने लिटरेचर रिव्यू के बेस पे बनाया. ये फिलहाल तो मैं आपको लग रहा होगा मैं खुद बना रहा हूं, बट मुझे पता चला, लोगों ने लिखा कि भाई परचेजिंग पैटर्न पे इंपैक्ट पड़ा डेली नीड प्रोडक्ट का. डेली नीड प्रोडक्ट लोगों ने ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया, पहले इतना नहीं होता था, लोगों ने बल्क में खरीदना शुरू कर दिया. तो मैंने क्या किया, हाइपोथेसिस बनाई, नेगेटिव स्टेटमेंट. ओके, अब आपको सर आपने तो नो लिखा है, जबकि आप कह रहे हो कि इंपैक्ट पड़ा था, बट आपने नो क्यों लिखा? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा. हाइपोथेसिस दो बनती हैं, ओके? हाइपोथेसिस देयर आर टू, वन इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस, अनदर इज कॉल्ड अल्टरनेट हाइपोथेसिस. ओके, नल इज कॉल्ड नेगेटिव स्टेटमेंट, अल्टरनेट इज कॉल्ड पॉजिटिव स्टेटमेंट. ओके, जनरली ये ट्रू होती है. सच्चाई क्या है? अल्टरनेट. लुक एट दिस लाइन, there was no impact of COVID-19 on purchasing pattern towards daily need. No है ना, यानी कि ये कौन सी हाइपोथेसिस हुई? नल हाइपोथेसिस, क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट लिखा है. जनरली ये फॉल्स होनी चाहिए, जनरली ये फॉल्स होनी चाहिए. तो हम जब पेपर लिखते हैं तो हम पेपर में नल हाइपोथेसिस लिखते हैं. बी राइट नल हाइपोथेसिस, बी राइट नेगेटिव हाइपोथेसिस इन पेपर. इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट लिखा. यस, लिटरेचर रिव्यू कह रहा है कि कोविड-19 का डेली नीड प्रोडक्ट की परचेजिंग पॉइंट पे इंपैक्ट पड़ा है, लोगों की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई, पीपल स्टार्टेड टू होल्ड करने लगे, बल्क में खरीदने लगे. बट हमने लिखा नहीं भाई साहब, कोई फर्क नहीं पड़ा. तो क्या होगा, मेरा जो डेटा आएगा वो इसको रिजेक्ट कर देगा. तो जो मेरा डेटा इकट्ठा आएगा, अगर इफ माई रिसर्च इज करेक्ट, कोई बताएगा तो मेरी कौन सी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होनी चाहिए? इफ माय रिसर्च इज करेक्ट, तो इन दोनों स्टेटमेंट्स में मुझे कौन सा स्टेटमेंट एक्सेप्ट करना चाहिए एट द एंड? कोई बताएगा? एनी वन ऑफ यू? ये क्लियर नहीं हुआ, फिर से बताऊं. आवाज आ रही है आप लोगों को? Two-way session. एक सिंपल सा क्वेश्चन था. Yeah, Vishwas ji, it's not a two-way session. At the end of the session, we have query session. So you carry on with your okay. ठीक है, राइट. अगर मेरी रिसर्च सही है, if my research is correct, then I will reject the null hypothesis. I will reject the
नल हाइपोथेसिस, सिंपल, दैट्स इट। यही कंक्लूजन आपका निकल के आना चाहिए। देखिए पहले जब आप शुरुआत करो एकेडमिक पेपर लिखने की तो सिंपल सा पेपर लिखना बिल्कुल इसी तरीके से। मैं फिर बता रहा हूं, जब हम लिटरेचर रिव्यू पढ़ते हैं तो वो हमें कुछ आंसर ऑटोमेटिक दे देता है। मेरे लिटरेचर रिव्यू ने बताया कि भाई कोविड-19 का हमारे परचेजिंग पैटर्न पे इंपैक्ट पड़ा, खासकर डेली नीड प्रोडक्ट की परचेजिंग पैटर्न पे इंपैक्ट पड़ा। ओके, हमने बोला नल हाइपोथेसिस बना दी कि भाई साहब नहीं पड़ा, देयर वाज नो इंपैक्ट ऑफ कोविड-19, राइट। फिर हमने डेटा इकट्ठा किया, लोगों से पूछा, अगर मेरी रिसर्च सही है तो देन क्या होगा, ये जो नल है ये रिजेक्ट हो जाएगा, राइट। ये वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत प्रूव हो जाएगा। यही मेरी एट द एंड दैट विल बी माय विन, कि यस मैं जीत गया, यानी कि मैंने जो सोचा था, जो मेरा लिटरेचर रिव्यू था वो सही साबित हुआ, यानी कि जो मैं सोच रहा था, मैं हाइपोथेसिस बनाना चाह रहा था वो सही है, यानी कि मेरा डेटा सही है, मेरी माय रिसर्च इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, माय रिसर्च इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, राइट। तो हाइपोथेसिस बन गई। फिर हाइपोथेसिस के बाद आप एक क्वेश्चनर बनाते हो। आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत क्वेश्चनर भरे होंगे लाइफ में, है ना। मैं आपको एक क्वेश्चनर का एक एग्जांपल दिखाता हूं। देखिए क्वेश्चनर क्या होता है, जस्ट होल्ड ऑन, कैसे बनता है क्वेश्चनर। ओके, देखिए एक टॉपिक था कि इसमें टॉपिक आ जाएगा, लेट इट ओपन। ओके, डेवलपिंग स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर सोशल मीडिया बेस्ड बिजनेस एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन एनसीआर ऑफ इंडिया। कि जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो व्हाट्सएप पर अपना बिजनेस चला रही हैं, साड़ी बेच रही हैं, मसाले बेच रही हैं, सब ओके, सब्जियां बेच रही हैं घर से, केक है, केक के बिजनेस, बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस चला रही हैं। ड्यूरिंग कोविड-19 बहुत सारी लेडीज ने बिजनेस चलाना शुरू किया, राइट। तो क्या उनके बिजनेस पे क्या इंपैक्ट पड़ा, क्या उनका कोई स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है, क्या भारत का कोई ऐसा रूल है, या कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो उसके हम लोगों ने एक स्टडी की है, राइट। ओके, तो एक क्वेश्चनर बनाया हमने, राइट। सिंपल से क्वेश्चनर होता है, टॉपिक आ गया, फिर हम चाहते फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट सोशल प्लेटफॉर्म हेल्पफुल इन बिजनेस। ओके, ये केवल और केवल लेडीज पूछ रही है। फर्स्ट एडेड सोशल मीडिया पॉलिसीज, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, स्कोप ऑफ मेकिंग, सिक्योरिटी ऑफ डेटा, प्रेफरेंस बाय कंज्यूमर्स, हाउ डू फॉलोइंग कंज्यूमर रिस्पॉन्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू इम्पैक्ट योर बिजनेस परफॉर्मेंस। फिर हमने कुछ और लोगों ने इसमें आंसर दिए। दिस इज डेटा। फाइनली हम लोगों ने डेटा कलेक्ट किया और यह एक डेमोग्राफिक डेटा आ गया। उनका नाम, मेल आईडी, फोन नंबर, लोकेशन, कहाँ से कौन सी सर्विस चलाते हैं, बेकरी का बिजनेस है, ज्वेलरी का है, योगा, अदर फूड आइटम, हाउस होल्ड, डाइटिशियन सर्विस, लाइक्स। ओके, तो एक क्वेश्चन आया, फिर हमने डेटा इकट्ठा किया। नाउ डेटा कैसे एनालाइज किया, इसी डेटा को जब इस क्वेश्चनर से डेटा इकट्ठा हुआ, वो मेरा डेटा एक्सेल में आ गया। कैसे हुआ देखिए, ये है एक्सेल फाइल आपके सामने, दिखाता हूं अभी। हमने करीब 400 लेडीज से, 400 वुमेन से हमने डेटा इकट्ठा लिया और इसको एक्सेल फाइल में कन्वर्ट कर दिया। आपको वैसे 444 क्या है ना, बता दो। फर्स्ट लेडी ने जब आंसर दिया, वुमेन एंटरप्रेन्योर ने, उसने 4 पे टिक किया, 4 पे किया, 3 पे किया, 5 पे किया। हमने ये जो आंसर है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके, उसने 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 इस तरीके से उसने डेटा आंसर दिया है यहाँ पर, लाइक दिस। तो हमने करीब 400 लोगों से डेटा इकट्ठा किया। फिर उसको सॉफ्टवेयर में एनालाइज करना, एक्सेल से एनालाइज नहीं होता, ह्यूज वन। कुछ
कुछ इशू आया था शायद मेरी साइड से। Yeah, there is some technical disruption at the end of the faculty. By the time faculty join, I take this opportunity to add on what Professor Viswas has already spoken. So, no, I'm audible. Sonesh ji, I'm audible, na? Yeah. Yeah. So we were discussing on what is research. So as rightly said by Vishwas ji, that research have a great dimensions, and in how to write a research proposal, what is research, all these things are interrelated. I'm sharing my hand-on experience on daily queries of 4 or 5 daily queries. Yesterday, I had an opportunity to interact with a member, very senior member of the profession. He qualified in 1973. He chartered accountancy, very senior member of the profession. He visited ICI. He came to me. I was surprised to see his enthusiasm, that how enthusiasm he was having on research. And he was very pinpoint on, sir, I want to do research. Let me share with you, he passed in 1973. I born in October 79. So how could I be able to teach him or guide him? Then with my limited knowledge, I told, sir, I'm giving you 3 or 4 examples. If I would be able to guide you or help you in understanding what is research, so please excuse me if I'm not able to communicate what you want to listen from me. We were sitting together. There was a fan on wall. Then I started my deliberation with this, that sir, you may think that 4 flags of this fan may give you more pleasure, more air, it may be more cool or something like this. Well, yes, one can have this perception. So, sir, it is not research. Then he was surprised. Why? And I told him, sir, very simple question. This is your perception. That 4 flags can give you more pleasure. But research is not a perception. One has to make it very clear. You may be thinking something, but it is not research. Research is what you think and what data proves. So giving you this example, suppose I think that 4 flags will give me more pleasure or more air and this and that. Then what I have to do? First, I have to check whether there is a research already done. With my limited knowledge, I may be thinking that 4 flags there may be already 4 flag fans. So this finding whether there is already 4 flags is called literature review. This is literature review. And for any research, first you conceptualize something, you build some knowledge, you have some perception, test your perception with the existing literature you have. This is called literature review. This is the basic of any research. One has to do extensive literature review, sir. Then after this literature review, if you find that there is no study, whether there is a difference in 3 flags or 4 flags, if there is no difference, it is not proved. There is a difference if it is proved. It's a matter of perception as of now. If there is a literature review already available, then you have to see what is the limitation of that study. Why you require to do research if it is going to value add. If it is not going to add any value, then there is no fun of having repetitive work, repetitive research on the same thing. If there is no value addition, then you stop your idea here, because you will satisfy with the findings of others. If already research is not there,
then you have to formulate some hypothesis. One hypothesis can be 4 flags of any fan can give me more pleasure. And to test that hypothesis, what you require? You have to decide research methodology. You have to finalize the data. You have to finalize what are the data, universe of the data, sample size selection, tool designing, then testing of these data. Research is always unbiased. It is not necessary. It is not necessary that what you think is proved in your research. It may be vice versa. You are thinking that 4 flags is giving you pleasure, but your research finding, your data may prove it wrong. So this is all about the research. So where I was, so the member was so impressed that he told me, he's very senior, he is the age of my grandfather. He told me that, I was in hurry, I was having some another meeting. We have national conference at Ghaziabad, so I have to rush for that meeting. So he was so happy when he was entering in the room. He was very angry that nobody is listening me, this and that. Then after this, he told me that I will take tea. It will take time. You go and finish your work. I'm quite okay with your answer. So I think he was satisfied with this. I don't know how much you people are, but I took this opportunity to share my experience, what is research. So this is one. To add on this, thank you, sir. Thank you. So to add on this, I would like to share few more additional things. Sir, any research is not complete. One should do research, some perception is there, then hypothesis is created, hypothesis is tested with the help of data, and after that, because once you conceptualize something, when you are writing a research proposal, when you have started a research proposal, when you started your research, you may be having some shortcomings. Every research. So at the end of any research, you should limit it with your limitation of the study. What are the limitation of that study? This could have been better than if I could have done this. Because I'm giving few practical example of my research. In the Corona period, we came out with one study. I'm audible, sir? I'm audible to everyone? Yes, sir. Yes, sir, audible, sir. Yeah. Yeah. Yes. We came out with one study way back. Institute prescribed certain formats for reporting by universities. We wrote to UGC and Ministry of Higher Education, and these formats were made compulsory to these universities. Then we took a note that whether this circular is being implemented in the universities. We thought that we will do this, we will do this, we will do this. And we started doing our research. But at the end of, in between of the research, we found that we were in the Corona period. University was closed. Data was not available on the website of the universities because universities were not uploading their annual reports on the websites. So at the end of the research finding, we given one limitation of the study that because of the Corona period and limitations, we were unable to commute to universities, so selected in the sample size, and data available was very limited because some of the data was pertaining to year 2017, some data was pertaining to, it was vary from university to university. So for a good research, one should be very careful to giving the limitation of any study. Just simply.
Yeah. So, any question from any of the managing committee members? Or in between, I can share some of my schemes. One question I usually receive from the members at large, that why this doctoral scheme is limited. Vinitji, you must be receiving this query after this seminar, that Anujji has announced that there should be, we have a doctoral scholarship scheme for our members. Then again you will receive, from past 3 years I am receiving this query, that why it is limited to 40 years of the, why it is limited to 40 years. Sir, let me give you a brief of prelim of this scheme. 3 of the schemes were brought together in Feb 2020 by Council. Well, just after this approval of this scheme, there was a corona period for 2 years, and now we are smoothly moving towards a normal life. I was a part of this committee. I was secretary of this committee. When an agenda item was placed, why I am giving this brief about this scheme? It was very new scheme. The very purpose of bringing this scheme of doctoral scheme was to meet out the expenditure and opportunity cost of a young member. Sir, if one chartered accountant, well qualified chartered accountant, if you ask him or her to pursue doctorate, which takes, Anujji is taking 6 years. So if a young chartered accountant start pursuing PhD, it may take 4 years or 5 years if full time goes, or 3 years or 2 years, at least 2 years, maximum 7 years. Then one has to go for re-registration. So at least 2 years is required. Then it was well deliberated in the Council of ICI that we should at least meet out the opportunity cost of our young members, so that they can be tempted to pursue further study and can contribute as an academician in good institutions. This is one reason. Number, why young members? Because 50,000 is one of the token amount. It is not a full compensation or remuneration as a opportunity loss to my young member. But if ICI allow its senior members to pursue the PhD, then it's not an opportunity compensation. Number one. Number two, the very purpose of the scheme was to mainstream our member in academia. Big, good IIMs, reputed international institution where our member can act as an academician. So, if one start at the age of 60, then how long one would be able to contribute in academia? That's why this scheme was restricted up to the age of 40 years. This is the second reason. So you please appreciate that this is not a job. Please appreciate this fact that this is the Institute of Chartered Accountant of India who recognize that our members should be in academia, our brilliant, meritorious member who really want to pursue their career in academia. Some opportunity cost should be reimbursed by the institute. It is limited to 5 scholarships per annum. It's not a job, sir. So please appreciate this fact, number one. Number two, another scheme, at the same time to protect the interest of our senior members, we brought one another scheme, research project scheme, that restricts our 40 years members. Because in that scheme, one is required to have 10 years post-qualification experience. But again, sir, the prelim of that scheme, research project scheme, is not to provide any job opportunity or assignment to any member.
It is to giving back to the society. I know many of the members, even almost every member. It is the beauty of our profession that our members are willing or rather eager to give back to the society. It is the only profession where faculties are not charging anything. Our own members contribute in the seminars, they devote their time. So, keeping with this fact that why one member, those who is having expertise in particular domain, why they are not doing organized research. Every member every day do some research, but to promote them to do some organized research, we brought this scheme of research project scheme, wherein any senior member who wish to giving back to the society in form of a organized research, we do reimburse the expenditure up to rupees 10 lakh, where there is no remuneration to the researcher, but to meet out the out-of-pocket expenditure. Out-of-pocket expenditure includes, because one senior member is not supposed to type, write, or assist. So, for conducting that research, one may require some project associates, research associates, some typing assistants, some statistical assistants, some literature is required, some journals is required, some subscription is required. To meet out these expenditures, we brought out this research project scheme. So I think I have clarified these schemes and region and prelim of these schemes. And you would wonder that in past 2 years, we have came out with around 7-8 studies. And each study is speaking by its research findings. You will be witnessing one of the webinar on very 1st June. Mahima, it's on 1st June, 4 to 6, Australia. Yeah, 1st June we have a VCM on research finding, which have we conducted in 2020. The research study findings were shared with the Ministry of Commerce, Honorable Piyush Goyal sir, and I'm not sure fully or how much, but the finding of the research study came in form of result. Now Australia and India is having trade treaty. Some agreement had happened few months back, 2nd April. So we should be proud institute. We were proactive that in 2020 we have given our suggestion, and that suggestion has been implemented. Whether fully or partly, I don't know, based on our research or not. But our research finding is similar to what happened today exactly. So this is the beauty of our institute. Our members, the researcher is our member of institute. He's a chartered accountant by profession, but now he is citizen of Australia. He's a professor over there. Is kind enough that he would be deliberating on. Additional Secretary Ministry of Commerce is the chief guest of that, who was instrumental in this TT. So, sir, that kind of work research committee is doing with the help of its members. This is one thing. Another thing I am sharing with you, one of our member conducted one study on multi-state cooperative societies, how they do money laundering. The findings of that study has been shared with various institutions. These institutions, EOW officers, were trained by Institute of Chartered Accountant of India that how multi-state cooperative society is doing money laundering. So that there should not be a perception gap. I think at the today's scenario, you would appreciate, I think we should have already shared with you that we are coming out with a study. You are from Bhilwara, so you would be very much aware about the Police University Jodhpur, Sardar Patel University of Jodhpur. We are coming out with a study, a thin line difference between professional negligence and criminal act.
there is a perception before the investigating officers about the professionals. We have to remove this perception that professionals have their own limitations. Based on certain documents only, they verify something. They can't held guilty for the act of the others, because they can't dream inside what happened, what fraud is there, what forgery is there. They are merely supposed to discharge their professional duty based on certain documents. So IO must have understand this thing, that there is a difference between criminal act and professional negligence. There may be negligence at the end of my member, but it is not a criminal act. So one should not treat my member as a criminal. Institute is there, disciplinary mechanism is there. So by this study, we would be showcasing with examples. Although it's very early, I'm sharing, I don't know, as a research, I think I should share it or not. But because I am also part of that study, so as a researcher, I can share with you. We are bringing out in form of cases that final verdict and the charge sheet of the case, where IOs has given certain charges, but my member is discharged from that charges. It shows that there is a perception gap. Our members cannot be held guilty for the acts which they have not done. It may be their professional negligence, but one has to understand this fact that there is a difference between professional negligence and criminal act. So I think at Institute is an opportunity to me. I don't know. You are missing Dr. Vishwas because somehow I took his session. But no sir, you are giving very right perspective, describing the perspective of ICI, how they want their members, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है सारे मेंबर्स का कि हाँ भाई इस तरीके से जो वर्किंग हो रही है वो आगे जाके मेंबर्स को सेव भी करेगी और अल्टीमेटली मेंबर्स को हर चीज में बेनिफिट मिलेगा. डेफिनेटली सर, थैंक यू सर. बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए सर. Yeah. So sir, I think this is the right platform and right time where we can discuss the institute perspective. Our leadership every day. I think you were not aware that we have conducted this study. We have already initiated it 6 months back, because every research study take place, because this incident happened just now. But we have started long back because we were thinking that there is a perception in the market that has to be removed. We are a noble profession. Our members are contributing for the profession. I was sitting with in the interview process of the research study. I was sitting with some of the IOs, senior IPS officers. I told them that, sir, with due respect to every profession, please don't take it otherwise. I told them, by profession, I am also an advocate. Not advocate, but LLB, because I am not having that license of practice. But I told them that in one case where there is a murder, one argue that his client is not guilty. Another advocate argue that his client is being murdered. So at least one of the lawyer is defending wrongly. You will appreciate if they are not penalized. Similarly, my member is also based on the assessee's document. Based on the assessee's document with the limited knowledge on the subject, and after due diligence, what one can do, certify something, one cannot be held guilty, sir. Cannot be penalized as a criminal. So he was in concurrence. Somehow he was in concurrence that yes, this fact we were. I told him that it's a professional. Don't target professional, sir. I am giving one example.
Very simple example. It is also part of research, sir. If you come, Nirbhik Gandhi ji comes to me, he knows to me or I knows to him. He says that Amit ji, please, or I come to Nikhil sir, Nirbhik Gandhi sir, please issue a net worth certificate. I am giving 2-3 scenario. He knows me. He usually comes to my home. I usually comes to his home. We take lunch together, dinner together for past 10 years. I told him that this is my house, this is my bank balance, this is this. I give him bank statement. He knows that I have 4 cars. Out of these 4 cars, 1 car is in my wife's name. In good faith, he has issued 1 net worth certificate. Do you think it's a criminal act? No, it's not. Its intention was not criminal, but yes, of course, it is a professional negligence. But one cannot be treated like a criminal, that you have conspiracy with Amit Agrawal and did this wrong thing. One should not. This thin line difference one has to understand. Number 2, I'm giving another scenario. He asked me for the documents. I gave him documents of my property. I smartly color photocopied all my original documents and shown to him. An original document I pledged with bank. So in my net worth certificate, it will not show. So how one can held guilty? He kept the photocopies because of course client is not giving him original copies. So he kept the photocopies. So how one can held guilty? So these are some of the areas. Every field is having researcher. So in nutshell, I would say what is research is best known to everybody. Research is the area which start with research, end with research, and keep researching. So I think we had a very good session. So some of the questions we have some questions. So anybody from the managing committee would like to ask any question? Anybody is having any question? Mahima ji, you please ask. Please ask. If anybody having any question, any from audience side? Sir, one member from Kolkata, Mr. Manas Mohan Niyogi, is asking, what is the beneficial interest for making research by the members? Pardon? What is the beneficial interest making research by the members of the institute? What is the benefit of doing research By the members. by the members? Sir, once I was attending one session of Mr. Rudra Murthy, a very famous faculty in the capital market. He's a member of the Institute of Chartered Accountants of India. He was sharing one example that one professor and his driver was traveling together to take a session. Professor was tired, and professor asked that I am tired and I am not able to take this session today. Then his driver told, the sir, is very simple, I will take on behalf of you. Then professor was very surprised, how he will take the session? But they agreed and mutually they changed the clothes, and driver took the session and professor was sitting at the last row.
It was a wonderful session because in thousands of the lecture, driver was following him and understood each and everything. But at the end also, he didn't forget to ask question like professor. Anybody is having any questions? So similar situations comes to me, and he is stuck because he copied the whole deliberation, but he was not aware nothing new. If something new came, how to respond? Then he told, how simple this is. My driver can answer it. So professor was sitting at the last row, answered that question. So I'm coming on that thing, that how research is beneficial. Even my colleague Sagar or Mahima can told you, but again, I take this opportunity. I will not ask them to answer this query. It's not that easy, but it's not too hard also. Research is beneficial not for chartered account, for everybody. If you keep doing research, what is Paytm? It's an innovation research. Digital banking, Paytm, Ola, Uber, Tally. What is this? It's research, na sir? So if we chartered accountant invent something, it is all research, sir. If you ask me in particular as a profession, if you do research and if you are interested in academia, it's lot of opportunities there. If you don't want to be academician, but you want to do behavioral research, you can be there. If you want to do marketing research, you can be there in marketing. So plenty of options are there. Even in your daily routine practice, if you do research, sir, let me share with you, plenty of options are there. We have one project associate, young chartered accountant, Mr. Rahul Pal. He's a chartered accountant by profession. He keep doing research. Now he is seeking his career in mountaineering. So everything is open. Don't limit yourself with the taxation or audit or accounting. He's a young chartered accountant, brilliant chartered accountant, working with the research committee for past 2 years. He's seeking his career in the mountaineering. So he was keep doing this research. So I don't think research is beneficial for everybody, not only chartered accountant. Anybody who is inclined toward research will get indeed will get something new. Anyone from the managing committee having any query, please? Or I should take query from the members? I think, sir, you can take queries from members. Yeah, Sagar, any other query? Yes, sir. Sir, one member from Bhubaneswar, CA Somdat Rath, is asking whether hypothesis testing is mandatory for all the research papers. Sir, there are various kind of research. It depends on the nature of the research. If you have some perception, then hypothesis should be there. To test this hypothesis, some data should be there. But it is not mandatory to have hypothesis in all the research. Just giving you an example. But it is not research. Sometimes we have to understand the thin line difference between the study and the research study. Some diagnosis study is there. So no hypothesis required. In that case, you have research questions with you. It's a long deliberation is required to understand this thin line difference between the research question and hypothesis. But of course, in each and every research, there is no as such formal hypothesis required, but you should have some research question in your mind, what you are going to test. So one member from Kuwait, Sadaf Mukhtar, is asking that this topic is normally ignored by the members. So is there any place centrally where one can locate topic on which research has already been done? Okay. It's a good suggestion. However, in past, what research has been done is available on the research committee's page on the institute central page, ici.org.
And in ICI.org, if you go for committee page, you will see the various committees pages, and each committee have their domain specific research. One can go through that, and some central repository we can think of. It's a nice suggestion. We will act upon. So one of the members from Chennai is asking what would be good topics for research? What should be good topic? I think I have already answered this to one senior member, that what should be good topic. Research can start on any topic, because I don't think it's a Newton कि वो ऊपर से कुछ गिर गया था, something. Then innovation of the gravity. I think it's Newton, na? Sagar? Some gravity Newton, na? Yeah. So it started with he was sleeping and something fall on, and then a gravity invented. So research can be done on any topic. Any other question? Sir, one member from Bhilwara, Ms. Kanika Samdani, is asking how to publicize these research papers. Yeah. You should write a research paper, and there are various research journals, domain specific. Some are for operation research, some are for accounting, some are for history, some are for sociology, some for economics, some for political. So each domain journal you have, you write to them that, sir, I have done this research. You send them research paper. Then there is a peer review journal. What they do after receiving your article, they do some review. They ask if they are interested in your topic or the content of the topic. They may ask you some further improvement or accept as it is. There is a whole long process. So you do Google on your topic, that this is the topic and related journal. There are various journals. It is categorized in various form. ABDC journal, impact journals having impact factor more than 3 or 7 kind of thing. So the nature of your research work, if it's match with their eligibility criteria, they will publish it. So one of the members from Delhi is asking what is the difference between research hypothesis and research questions? Research hypothesis and research question, again I am telling you, hypothesis is a perception, null hypothesis and alternate hypothesis. There are two kinds of hypothesis, null hypothesis and alternate hypothesis. Both are vice versa. In one, we are thinking that this is giving me pleasure. Another hypothesis would be it is not giving pleasure. And research question is similar to the hypothesis. As previous viewer asked this question, that in some cases you can work upon based on the research question. In some cases, you have to be very particular on the hypothesis. A detailed deliberation is required. Time is a constraint. Otherwise, I could have explained it in a better way. Last question I will take. Then time, we have to avoid with the time. Saloni Jain from New Delhi is asked, how can we ensure that the supportings in the research for rejecting the hypothesis is enough, and what is the length of the research paper? I'm giving the practical example. I did my PhD in 2005. I was a UGC scholar. I was regular researcher. I think it's postdoc 17 years of my experience. I wrote around 4 or 5 research papers or books. Only 4 or 5. So I will start reversing, giving the reply of reverse query, the length of the research paper. Length of the research paper is not limited with the number of the pages. How effectively you communicate your research
It is enough if you can communicate in 2 pages, or it can be less if you can't communicate in 200 pages. One can briefly explain the research question, hypothesis, everything in few of the lines. Or one research may take number of pages to explain this. This is the length of. Another question is, first question is, Sir, how can we ensure that? yeah. How you will ensure that this is the sufficient this to prove this hypothesis, sufficient data is taken. There is a booklet given on the website of the ICI Research Committee, beginner's module. You please go through that. In initial deliberation, I told that once you decide hypothesis, then you have to decide research methodology. And in the research methodology part, you have to decide sample size. And sample size decision is being taken based on the universe. Universe means whole universe data available. Because it is not possible or impractical to collect response from the whole universe. So there are certain statistical tools, some formulas are there, degree of margin of error is there. Put that margin of error and other figures in that statistical tool, you will find the number of the sample to be selected. Each research topic required a 2-3 hour deliberation. Even sample size selection required 2-3 hour deliberation. But I think briefly I have conveyed you. Based on that sample size selection, if your data is enough to that sample size, you can very well say that it's representing the universe. With these words, I think I seek excuse of the members if I am not able to respond their full queries, or I'm really very sorry that we missed the Professor Manoj Kumar ji, who is not with us, and also some technical disruption at the end of my learned Vishwas Gupta ji. But I think I tried my level best to justify this the topic. It was amazing, sir. It was amazing. बहुत ही अच्छा आपने सेशन आगे कैरी किया सर. और सर जो आपका सेशन था, तो एक इस पे गालिब का एक शेर मुझे आता है. सर गालिब कहा करते थे कि बढ़ो तो इतना बढ़ो कि खुद मंजिल लोहा मान ले, और रिसर्च करो इतना करो कि खुद बुक्स आपसे ज्ञान ले. तो सर जो आपका सेशन था, रियली हर चीज के लिए हमें आज रिसर्च की जो आवश्यकता है ही है. अगर मेंबर्स प्रोफेशनल लाइफ में अगर रिसर्च को अपनी हॉबी में लेके आ जाए, अभी डेवलप कर ले, तो आई थिंक बहुत कुछ हद तक हमारी जो आज की जो रिसेंट जो चैलेंजेस हैं वो सॉल्व हो जाए सर. तो थैंक यू सर बिलोड़ा ब्रांच का ओपन होने के लिए सर. इट वाज थैंक यू निर्भक सर. थैंक यू निर्भक सर. एंड आई वुड रिक्वेस्ट Murli sir. Murli sir is there? No sir, she is out of, so I think he is gone. And Vinit Jain ji? Yes sir, Vinit. For few words of wisdom, Vinit Jain ji? Yes sir. Thank you so much all of you for coming in the seminar and listening to the speakers. Thank you so much sir. Thank you Vinit ji. Punit ji is there? So now I take this opportunity to invite Somesh Kabra ji, the secretary of the Bhilwara branch of CIC of ICI, for offering formal vote of thanks. Thank you, sir. Thank you, Amit ji, sir. On behalf of Bhilwara branch, I, CA Sonesh Kabra, secretary, wants to thank you all the research committee team for giving us the opportunity to host your program. And आप सबने जो मेहनत की है, जो रिसर्च के बारे में आज हमें बताया है, सारे मेंबर्स को बताया है, उससे डेफिनेटली रिसर्च और रिसर्च के ऊपर जो काम करने का जिनको मतलब इच्छा है वो उसमें से और आगे बढ़ेगा. और पीएचडी डेफिनेटली आप अमित जी सर पीएचडी होल्डर हैं, अनुज जी सर कर ही रहे हैं, विश्वास जी पीएचडी होल्डर हैं, तो हमें बहुत देख के बहुत खुशी हो रही है कि हाँ कभी हम भी कोशिश कर सकते हैं पीएचडी करने के लिए. इसके लिए अमित सर रेगुलर गाइडेंस आपका चाहिएगा. डेफिनेटली सर. एंड स्पेशल थैंक्स टू आवर बिलव्ड सीसीएम एंड चेयरमैन ऑफ रिसर्च कमेटी अनुज जी गोयल सर. आपने इतना वैल्यूएबल टाइम निकाला
हमारे लिए और हम सबका ज्ञान बढ़ाया उस चीज के लिए. Special thanks to all the members who attended this meeting, the committee members, and our learner speaker Vishwas ji, Amit ji. You both have taken the best out of it. Research में जैसे आपने बताया था कि it starts from research and ends to research. Definitely सर, आपका ये ज्ञान भी हमको रेगुलर मिलता रहे, और ऐसी कभी फ्यूचर में हम चाहेंगे, भिलवाड़ा ब्रांच चाहेगी कि आपका फिजिकली सेमिनार यहाँ पे अवेलेबल हो तो हमें लिए बहुत अच्छा रहेगा सर. थैंक यू सर. मेरा सौभाग्य होगा. हमारा सर. धन्यवाद सर. Thank you. Thank you all the viewers for patience hearing. Thank you. Please bear with us if we missed your expectations. Thank you.